Hello all, good evening. We welcome you all to the TSL, the Super League match between two wonderful teams at the Fatima Cricket Ground. The Super League, a wonderful tournament, one of the hit tournaments in the previous season in 2021-22 is back again with some really good matches in the 2022-23 season. And this is your commentator Shaleen Gupta welcoming all the viewers and the spectators who are watching this match live, not only on the Jfsc YouTube channel but also live from the Fatima Cricket Ground. And the news from the center is that Ace Global has won the toss. Beg your pardon, Dynamic Supergiants, Magnus Supergiants have won the toss and they have elected to bat first against Ace Global. These are two wonderful teams. And the Magnus Supergiants and Ace Global both have a lot of wonderful players in their lineups. So it's going to be a cracker of a match for sure. So Supergiants batting first in this wonderful T20 match at the Fatima Cricket Ground, and Dhanraj about to open. The bowling for the Ace Global, Amar Padhe and Kedar Congo. Kedar Congo as the opening pair for the Supergiants, and this is going to be a cracker of a match. And as usual, we will be presenting both the English and the Hindi commentaries for our viewers. TSL is one tournament where not only English commentary is presented live but Hindi commentary as well. The first ball about to get bowled, the fielders are in position, and here we go. Dhanraj bowling to Amar Padhe, the first delivery. Oh, and that's a wonderful delivery to start the proceedings. A really nice delivery, short of length, and he's quick, this guy. Played well by Amar as well. That's a good start by both the teams. The bowler Dhanraj is a tall guy, definitely extract a lot of bounce from this pitch. Amar Padhe is a wonderful batsman, we all know about him, and this time this should be a wide and signaled by the umpire as well. That's a boundary, so 5 runs gifted there. Not a good start in terms of the line that he would have wanted to bowl. Just have a look at that replay once again, and the keeper tried his best, but 5 runs to open the account in this first innings of this wonderful match in the Super League, TSL as they call it. Supergiants, Dynamic Supergiants versus Ace Global. Two wonderful teams locking horns. Dhanraj coming into bowl his next delivery. Oh, and that's a wonderful comeback after that wide was bowled. Just have a look at that replay. Brilliantly bowled by him. Well left by Amar as well, just allowing it to go to the keeper. And just have a look at the carry as well. This is going to be a good contest here. The keeper almost carrying it above his waist. So it's a wonderful piece of bowling there. Dhanraj coming into bowl is next. Amar Padhe. That's a good shot. Cut really well straight to the point fielder. That's a wonderful piece of work by the fielder. And for a moment, the non-striker tried to go for the run but then realized no chance for that. Comes back into the crease. Kedar Congo at the non-striker's end. Dhanraj. And that's a poor delivery on his pads. Whips it nicely towards the boundary.
No chance of any fielder to stop that. The deep square leg is vacant there. Just have a look at that. What a shot that is. Whips it brilliantly. There's a saying in cricket, never bowl on the pads of the Indian batsman, no matter what level they are playing. Amar Padhe brings his first boundary. Another good delivery this time, played well by Amar. No run taken, and it's a wonderful start. Already 9 on the board. This is just the first over. Dhanraj is bowling well in patches here. Needs to be more consistent with the line specifically. Drifting down the leg side on a couple of occasions, and both the times he was punished. And this is the last delivery of the first over. This time, wonderfully cut, and what a shot that is! No chance for the point fielder. This will be a boundary. Wonderfully played towards the point, away from the point fielder. Just have a look at that. Brilliant shot played. And that was a good delivery. He just converted that into a boundary. This is a sign of a really, really high class player. Wonderfully played, and we'll show you the replay in the slow-mo as well. What a shot that was. Very close to his body and brilliantly played. And just have a look at that head position going in the direction of the bat. That is what is to be noted here. Youngsters watching can learn a lot from a lot of players here. That's the end of the first over, an expensive one. 13 without loss after 1 over. A wonderful start by Supergiants. We've got Aditya coming into bowl his first over. He will be sharing the new ball with Dhanraj. And on strike is Kedar Kango for the first time. Aditya. And that's a short delivery, played well towards the sweeper. There's a fielder out there, he does well, just a single. So Kedar off the mark. Aditya starting off with a short delivery. That was a good shot played. He's a wonderful bowler, Aditya. A genuine strike bowler. Has a wonderful ability to pick wickets up front. But they've started quite well. Supergiants. Just 1.1 over and 14 on the board already. Oh, and this is the one that he bowls so well. Needs to pitch it further up. Just a single this time. Probably will not come for the second. Decide only for a single. It's a good throw by sweeper fielder. That's a good start by Aditya, but he needs to pitch it further up. He's got the new ball in his hand. Needs to make the most of that swing that he has. A good single taken that time. Played it softly towards the square leg for a single. Which is really good batting by both these players, showing a lot of intent, both of them. This will be a wide. We'll show you the replay. That was a good delivery, but swung quite a lot more than what he would have liked. Oh, and that's a wonderful shot, and what a catch that is. Wow, amazing fielding this is. One of the best catches that you will ever see on a cricket field. Wow, what a catch that was. That was played in the air. Amar Padhe, he's a genuine stroke player. Oh, and just look at the catch. Absolutely stunning piece of work there by Jitesh Purabia.
He's a class act, this guy. What a catch that was. The first wicket gone. And Aditya, as usual, strikes for his team. Just have a look at that in the slow mo. That was uppish, and oh, and what a catch that is. The more you watch that catch, the more you are in praise of this fielder. Just have a look at that once again in the slow mo. And Aditya striking first blow. Just have a look at that catch. Jitesh Purabhi on fire. He's a wonderful act. Oh, and what a catch. Absolutely stunning catch this is. And the first wicket is down on the score of 17 for 1. Aditya, as we mentioned, has the ability to pick wickets in the power play with the new ball, and that's what he did again this time. What a catch that was. Definitely deserves another replay. I'll show you that once again. Wow. Oh, not get better catches than that one. So 17 for 1, Supergiants. This is just the second over, and a lot of action already in this match. And the new batsman, Aditya Shirodkar, coming into bat. The left-handed batsman taking his guard now. Aditya to Aditya now. It's going to be an interesting contest. That's a good shot played in the gap, but there's a fielder out there, the sweeper. Just a single. Vinod does really well there. Aditya bowling good line and a good length, and he adjusted quite well to the left-hander. So credit goes to the bowler here. He's an experienced campaigner, and he's done a good job in his first over. Aditya to Kedar Kango. Oh, and that's a wonderful delivery, but played well towards the square leg. Just a single. He's playing well there. Kedar needs to build a partnership with Aditya Shirodkar, and that's the end of the second over, and a successful over by Aditya. The score is 19 for 1 after 2 overs, and we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Dhanraj with his next over. That's a good start. Wonderfully bowled there. The perfect line. We'll show you the replay. The right channel to be bowling to the right hander. Just have a look at that. Perfect delivery. He's got some pace as well. This is a really good contest happening at the Fatima Cricket Ground. Good delivery. Played well by Kedar. Another good shot this time played towards the third man. Should just be a single. It's a good stop by the fielder.
Aditya Shirodkar back on strike. Dhanraj bowling a wonderful second over of his spell. Third in the innings. Oh, he comes down the track trying to hit the big shot. Misses it completely. That was a wonderful piece of bowling by Dhanraj. Probably saw him coming down the track. Just have a look at that. Oh, and that was so close to the edge. I'll show you this replay in the slow-mo there. Oh, that was seriously well bowled. He's a wonderful bowler there. Dhanraj, Aditya Shirodkar. Trying to go aerial but not succeeding that time. Oh, and this time another good delivery. And they're trying to take the quick run. Oh, this could have been a chance of a run out. So much action in the first 3 overs of this match. Just have a look at that. And the slip fielder doing really well, but that could have been out. He just missed it. A lot of action happening. This is just the 3rd over in this match, and oh, and in the air, just a single this time. A mid wicket does well, but he was trying to hit the big shot. Again, not succeeding. Probably the pace of Dhanraj is not allowing the batsman. Just have a look at that. That was a short delivery and asking to be hit, but it was a good try by the batsman Kedar Kango, trying to pull that but not succeeding. Just takes a single in the mid wicket region. In the air, and could be a boundary there. That's a wonderful stop. Absolutely stunning work there by the fielder. Coming all the way from long off. Just have a look at that. That was a good shot. Aditya coming into bowl is next over. That was a good shot by Kedar. A couple taken there. He saved 2 runs for his team for sure. I'll show you the replay. Just have a look at the replay there. That was slightly short of length and stayed back and played it in the air very nicely behind the mid-on fielder. This time he plays a scoop shot. Probably did not connect well. Just a single that time. Just have a look at that. Oh, and the intent was really nice, but the execution was probably not up to the mark. Just a single that time, and these are some really good players. High quality cricket being at display by both the teams. And TSL is all about that. Only the Super League. Such an entertaining tournament, and the quality of cricket is really high. Aditya this time bowling it full and played well towards the long on. Just a single. Played it over the bowler's head, and the long on fielder does well. So they're trying to build a partnership here. It's a good start. Aditya has taken a wicket already in his first over. This is his second. Oh, and he almost got him there. And is that an edge? We'll have to see the umpire signal. Yes, that was edged. Just have a look at that. Oh, and that was the inside edge. Hit the keeper's pads there. We'll show you the same in the slow-mo.
Oh yes, that was edged, but you can't blame the keeper there. Very, very difficult chance for him. Goes to the boundary. Really good batting there. They're trying to be aggressive, and we're back live here. This time played really well towards the deep backward square leg. Could be another boundary, and it is a boundary. What a shot that was, and Kedar Kango seems to be in some really good form and drifting down the leg side once again on his pads. A boundary scored again by Kedar Kango. He's on fire, this guy. He's playing so well already. 16 of 11 deliveries. This time a good delivery. That's a good comeback by the bowler. That's the end of the fourth over. The score is 30 for 1, and we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, you. Beg your pardon, the score is 34 for 1 after 4. We'll take a quick single. And we are here with the fifth over. Manoj coming into bowl his first over. On strike is Aditya Shirodkar. 34 for 1 is the score. And that's a wonderful shot. Played it well towards the deep backward square leg. What a pull shot that was, and a wonderful chase by the fielder. Couple taken easily. That's a good shot, and played in the air nicely. Just have a look at that chase. Brilliant stuff there by the fielder. 2 runs taken easily. We'll show you the replay. That was a wonderful shot. Not that short a delivery, but he played it brilliantly. Aditya Shirodkar. Manoj with his next delivery. You're live. Oh, and that's a poor delivery down the leg side. And do not take that single. But that was not only a wide delivery, it was a wild delivery. Just have a look at that. Oh, and he did not control that at all. This is the fifth over in the innings, and we'll be switching to the Hindi commentary from the next over. Another good shot. This time will be a boundary towards the deep square leg. What a player he is. Played it brilliantly towards the deep backward square leg. Aditya Shirodkar and Kedar Kango have started brilliantly. They are building a partnership which is not only rock solid, but look at the strike rate also that they're trying to maintain. What a shot that was. We'll show you the replay again, and they will have to bowl the right line here. The Ace Global team missing the trick there for sure. It was such a wonderful shot, and Aditya Shirodkar showing shades of Gautam Gambhir, the kind of shots he's playing. Just have a look at that pull shot. Oh, and that is really, really wonderfully played. Manoj will have to bowl outside that off stump line, and probably the keeper also suggesting the same to him. You can't bowl a short delivery, you can't bowl on the pads of the modern era batsmen. These are just so good. Oh, and this time again he bowls on the pads, but this was a foolish length, almost a yorker. We'll show you the replay. He misses that.
Was trying to take a single probably, but realized that he's very close to the ball, which is almost inside the crease. So that's a good delivery, but he will still have to start bowling that off-stump line. Another poor delivery, and this will be a wide, will be a boundary as well. And that is what I was mentioning there. This line will not help. This will help only the Supergiants. Poor delivery, and and you cannot give those easy runs, especially when you know that you have to chase in the second innings. 5 runs gifted again. So early Christmas for the Supergiants. They have been gifted 5 runs twice in this innings till now. And that is a line that you have to bowl as a bowler. Try to bring the ball back into the left-hander from outside the off stump, or maybe from the off stump. Not a good start by Manoj to his spell. A lot of runs being given in this over. Already 12 of this over in just 4 deliveries. So both the batsmen making a merry of the bowlers at the moment. That's a good shot. And that's a very good stop as well. Quick single taken by Aditya. And Aditya is the fielder as well in the covers. So just a single that time. 47 for 1 after 4.5. What a start by the Supergiants. The field being adjusted accordingly to the right hander now. This is the last delivery of Manoj's first over in spell. These are two wonderful teams. Supergiants starting off so well after electing to bat first once they wanted to, and this time an edge will be a boundary. This is really good batting. Probably he played it late deliberately. Just have a look at that. Absolutely. Just shuffled across to his leg stump to make some room for himself. We'll show you the replay in slow-mo. And that was a boundary. So really good batting by these two batsmen, and the 50 is up as well at the end of 5 overs. 51 for 1. We'll take a quick break and be back soon with the Hindi commentary now. Stay tuned, viewers. स्वागत करना चाहेंगे आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का इस द सुपर लीग TSL के मैच में 5 ओवर में 51 रन का बेहतरीन स्कोर बना लिया है सुपर जायंट्स ने। और मैं शालीन गुप्ता आपका कमेंटेटर हिंदी कमेंट्री लेकर आया हूं। विनोद की पहली गेंद, ये क्या यहां पर एक कैच हो जाएंगे? और ये क्या कर दिया इन्होंने? ये तो बहुत ही लचर क्षेत्र रक्षण यहां पर दिखाया है। आपको रिप्ले दिखाएंगे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास आदित्य शिरोडकर का, और शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र रक्षक ने यहां पर हाथ में लेने के बावजूद कैच को छोड़ दिया। और विनोद बेहतरीन गेंदबाज हैं और आते ही अपनी टीम को, अपने दल को ये विकेट दिला सकते थे, लेकिन लचर क्षेत्र रक्षण के चलते ये नहीं हो पाया। और आदित्य शिरोडकर को एक जीवनदान यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। केदार कांगो 20 पर खेल रहे हैं सिर्फ 12 गेंदों के बाद। बेहतरीन शुरुआत की उन्होंने पारी की।
अमरपाध्याय वापस पेविलियन जा चुके हैं पहले विकेट के रूप में, और ये छोटी गेंद और इसे सीधे हाथ में दे दिया विनोद के, और क्या कैच लिया है, वाह बेहतरीन यहां पर क्षेत्र रक्षण अपनी गेंदबाजी पर, कॉटन बोल्ड किया, और ये दूसरा विकेट भी गिरता हुआ, और ये बहुत ही हल्का यहां पर ये विकेट है। इतने बढ़िया खिलाड़ी अगर ऐसे आउट हो जाते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा निराशा होगी, और ये देखिए कितनी आसानी से ये विकेट चला गया। ये देखिए बाहर की गेंद थी, और क्यों ये इसको मारना चाह रहे थे समझ से बाहर है, हालांकि अपना विकेट खो चुके हैं, ये खुद से भी निराश होंगे। आपको फिर से एक बार रिप्ले दिखाएंगे। देखिए बहुत बाहर की गेंद थी, छोड़ते तो शायद वाइड हो जाती, लेकिन उन्होंने इसे शॉट खेलने के लिए चुना, और खराब शॉट भी सीधे हाथ में। विनोद ने आते ही विकेट दिला दिया है अपने दल को, और ये उनका दूसरा विकेट भी हो सकता था, लेकिन फिर भी पहली सफलता विनोद के लिए और दूसरी सफलता एस ग्लोबल दल के लिए। 52 पर 2 हो गया स्कोर। चेतन चाफेकर आए हैं नए बल्लेबाज। विनोद की बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं विनोद। तरह तरह के टूर्नामेंट्स प्रतियोगिता में हमने इनकी ज़बरदस्त गेंदबाजी देखी है, और अमूमन नई गेंद से या फिर पहले परिवर्तन के रूप में आते हैं गेंदबाजी करने। पावर प्ले में तो ज़रूर डालते हैं, आज भी 1 ओवर डलवाया है कप्तान ने उनको, और यही इनकी खासियत भी है। विकेट तो लेते ही हैं ये, इस बार भी उन्होंने यही किया। विनोद की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिया। केदार कांगो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि उन्हें निराशा हो गई, जिस तरह के शॉट खेलकर वो आउट हुए हैं। बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी, बेहतरीन शॉट्स खेल रहे थे, और दुर्भाग्यपूर्ण वश खराब शॉट खेलकर आउट हुए। विनोद की अगली गेंद चेतन चाफेकर की पहली गेंद, क्या गेंदबाजी है, वाह स्टंप के बाहर रखते हैं, और यही खास बात है इनकी, और ये लगातार डालते रहते हैं, ऐसा लगता है सिक्का डालकर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस तरह के गेंदबाजों की एक अलग पहचान है। देखिए बहुत लंबा रनअप नहीं है इनका, 8-10 कदम के रनअप से आते हैं, और ज़बरदस्त गेंदबाजी, और जो नियंत्रण है गेंद पर, वही तो असली पहचान है इनकी, और वही इनकी ताकत भी है। बढ़िया गेंदबाजी एक बार फिर से इस बार, लेकिन वाइड का इशारा, थोड़ा सा बाहर हो गई, ज़्यादा बाहर डाल दी इन्होंने इस बार ऑफ स्टंप के। एक वाइड गेंद दे दी है यहाँ पर अंपायर ने। विनोद की अगली गेंद, और ये बेहतरीन शॉट, और ये चौका होगा। जी हां, बेहतरीन शॉट, कवर्स की दिशा में खेला हुआ शॉट, और 4 रन। चेतन चाफेकर ने बड़े ही निराले अंदाज में क्या बेहतरीन शॉट मारकर अपना खाता खोला है, और क्षेत्र रक्षण करने की कोशिश भी की, प्रयास अच्छा था, लेकिन चौका नहीं बचा पाए। तारीफ करनी होगी यहां पर चेतन की, बढ़िया बल्लेबाजी। अगली गेंद विनोद की, बढ़िया गेंदबाजी, और उसे जाने दिया, क्रिकेट की भाषा में जिसे वेल लेफ्ट कहते हैं। चेतन ने वो किया, और बेहतरीन गेंदबाजी, और यही तो खासियत है इनकी, मौका देते हैं बल्लेबाज को गलती करने का। तो गलती लगभग कर ही चुके थे, और क्या ओवर कराया, आपको रिप्ले दिखाएंगे। बच गए यहां पर चेतन चापेकर, और 6 ओवर के बाद स्कोर है 57 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी एस ग्लोबल के गेंदबाजों द्वारा पिछले 2-3 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज आदित्य और सलामी बल्लेबाज अमरपाध्याय और केदार कांगो, लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाजों को पेविलियन भेज दिया है, और अच्छी वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ओवर में 57 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ।
केतन आए हैं अपना पहला ओवर लेकर, और बढ़िया गेंदबाजी केतन के द्वारा। आदित्य शिरोडकर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए वहां पर। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की है, देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर लेंथ गेंद की तारीफ करनी होगी। और अगर पहली गेंद ही ऐसी डालेंगे तो फिर तो बात ही क्या है। 4 ओवर तक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं बल्लेबाजों के लिए केतन। बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ। एक रन मिला इस बार। और ये बेहतरीन गेंदबाजी, इस बार फंस गए चेतन, और ये रनआउट का यहां पर, और ये चूक गए यहां पर गेंदबाज। रनआउट का पूरा मौका था, देखिए किस तरह से चूके यहां पर, और ये रन नहीं लेना चाहिए था लेकिन बच गए, रनआउट हो जाते। अब तो स्लो मोशन में दिखाएंगे ये रिप्ले, देखना बहुत जरूरी कैसे बचे, और बहुत ही बेहतरीन एक क्षण हो जाता इस ग्लोबल के लिए। देखिए स्ट्रगल कर रहे थे, मुश्किल में थे, लग रहा था कि वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यहां पर गेंदबाज से चूक हो गई, हाथ में गेंद नहीं आई। और कभी कभी हो जाता है कि आउट करने की जल्दी में गेंद हाथ से निकल जाती है, वही हुआ इस बार। लेग बाय का इशारा अंपायर का, लेकिन बहुत बड़ा यहां पर मौका गंवाया है इस ग्लोबल ने। आदित्य स्ट्राइक पर वापस, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा शॉट खेला पॉइंट की तरफ, एक रन तेजी से लिया इस बार, वापस रन आउट करने की कोशिश, लेकिन इस बार तो आराम से पहुंच गए। बहुत बेहतरीन यहां पर क्रिकेट देखने को मिल रही है फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पे। केतन की बेहतरीन गेंदबाजी, पिछली गेंद पर अगर गेंद को हाथ में सही तरीके से लेता तो शायद अभी 60 पर 2 की जगह 59 पर 3 होता। अट्ठावन पर 3 होता, क्योंकि वो रन भी नहीं बनता, लेकिन अभी 60 पर 2 है, और ये बच गए। क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और बच गए। यहां पर बोल्ड भी हो सकता था, एलबीडब्ल्यू भी हो सकता था। ये देखिए बल्ला लगा, स्लो मोशन में दिखाएंगे आपको। बेहतरीन गेंदबाजी कहूंगा मैं इसे, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। देखिए स्लो मोशन में कैसे अंदरूनी किनारा लगा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। चेतन चाफेकर, इसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं फ्लर्टिंग विद डेंजर। अभी तो ऐसे ही खेल रहे हैं, 2 बार आउट होते होते बचे हैं, और इस बार वापस कुछ नया करने की कोशिश, और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। दूसरे के लिए भी आना चाहेंगे, जी हाँ, लेकिन वापस यहां पर भेजा, बच गए। क्या कर रहे हैं यहां पर, बहुत ज्यादा तालमेल में यहां पर कमी है। ये देखिए दूसरे रन के लिए जा रहे थे, लेकिन मना किया अंत में, और आदित्य शिरोडकर वापस समय पर पहुंच गए। और ओवर की समाप्ति बहुत ही बेहतरीन ओवर, 7 ओवर में 61 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 4 रन आए उस ओवर में। 3 रन बल्ले से आए, एक एक्स्ट्रास था, अतिरिक्त रन। 7 ओवर में 61 पर 2।
नीले आए हैं नए गेंदबाज के तौर पर, पहला ओवर, और बहुत अच्छे इनके पास ऑप्शंस हैं गेंदबाजी में। नीले की अगली गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, तेजी से एक रन लिया यहाँ पर, आसानी से ले लिया चेतन चापेकर ने। एक से एक बेहतरीन विकल्प हैं गेंदबाजी में, और इस बार हवा में खिला हुआ शॉट, बेहतरीन शॉट, गेंदबाज के पीछे से सर के ऊपर मारा। एक ही रन मिलेगा वहां पर, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक ने अच्छा क्षेत्र रक्षण किया। अगली गेंद नीले की, छोटी गेंद, बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में। विनोद की बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, एक भी रन नहीं दिया। डॉट गेंद, 63 पर 2 है स्कोर। 8वां ओवर चल रहा है, रन रेट भी अच्छा है सुपर जायंट्स का। इस तरह से ही खेलते रहेंगे तो 170 180 के करीब पहुंचना चाहिए। इनके पास बेहतरीन बल्लेबाजी क्रम है। बढ़िया शॉट, लेग स्टंप की तरफ आए और बेहतरीन शॉट, लेकिन एक ही रन मिलेगा। स्वीपर कवर की बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर फील्डिंग, और क्या थ्रो, तारीफ करनी होगी यहाँ पर क्षेत्र रक्षण इस तरह से किया है इस बार स्वीपर कवर के क्षेत्र रक्षक ने। ये देखिए क्या थ्रो दिया है, वाह। बढ़िया शॉट, आगे आकर खेलने की कोशिश, लेकिन सीधे कवर्स के क्षेत्र रक्षक के हाथ में। हालांकि शॉट अच्छा था, लेकिन बहुत ही सधी हुई शुरुआत नीले की। 8 ओवर में 64 रन स्कोर है, सिर्फ 3 रन दिए उस ओवर में नीले ने। उनका पहला ओवर था ये। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। अगला ओवर, बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर केतन की। इनका दूसरा ओवर है और क्या शुरुआत की है, वाह। बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं ये, और बहुत ही अनुभवी भी। चेतन चापेकर थोड़ा सा दबाव में खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। देखना है कि क्या कुछ बड़ा शॉट मारकर दबाव मिटाना चाहेंगे अपने ऊपर से। जी हाँ, जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, और ये बड़ा शॉट है, 6 रन, वाह। बेहतरीन बल्लेबाजी, और ऐसा लग रहा था कि मुझे सुन रहे हैं वो। क्या शॉट मारा है डीप मिड विकेट पर, काव कॉर्नर की दिशा में। 6 रन, तारीफ करनी होगी, बेहतरीन छक्का। और यही तरीका होता है आपको अगर एक बल्लेबाज के तौर पर अपने ऊपर से दबाव हटाना है। बेहतरीन शॉट, ये अच्छी गेंद थी, इसे खराब गेंद नहीं कह सकते, लेकिन क्या पिक किया इसे, वाह। क्षेत्र रक्षक था वहां पर, लेकिन सिर्फ एक दर्शक की तरह देखते रहे। बड़ा शॉट खेला 6 रन के लिए केतन। अब देखते हैं अपने तरकश में से कौन सा तीर निकालेंगे बल्लेबाज के लिए। बेहतरीन गेंदबाज हैं, और ये बढ़िया गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाद। बहुत बढ़िया वापसी है केतन की।
और ये बच गए। क्या वापसी है यहाँ पर, गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। ऐसा लगा कि शायद बाहरी किनारा लगा था। क्या गेंदबाजी, ये देखिए स्लो मोशन में दिखाएंगे आपको। और ये इतना ज़रा सा बचे, बल्ले के बहुत नज़दीक से गई ये गेंद। और ऐसा लगा कि बल्ले का बाहरी किनारा लगते लगते बच गया। बहुत अच्छी वापसी, 2 डॉट बॉल छक्के के बाद। तारीफ करनी होगी केतन की यहाँ पर। और ये छोटी गेंद, बढ़िया शॉट यहाँ पर, स्वीपर कवर की बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन मिलेगा, लेकिन ये अच्छा शॉट था और 1 रन लेकर स्ट्राइक बदली उन्होंने। ये देखिए थोड़ी सी छोटी थी ये गेंद, लेंथ इसकी ज़रा सी बेहतर हो सकती थी। रिप्ले दिखाएंगे, छोटी गेंद थी, देखिए बढ़िया शॉट खेला। केतन किशोर की आखिरी गेंद, इनका दूसरा ओवर है। आदित्य शिरोड का स्ट्राइक पर, और ये बच गए यहाँ पर। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन सोच तो अच्छी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन जो होता है, कार्य प्रणाली, वहाँ पर चूक कर गए। और ये डॉट गेंद हो गई और ओवर की समाप्ति। 71 पर 2, 9 ओवर के बाद बेहतरीन रन रेट लेकर चल रहे हैं। लगभग 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेल रहे हैं सुपर जायंट्स। अभी कुछ बड़े बैट्समैन, अच्छे ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी आना बाकी हैं इनके क्रम में अभी। तो एक बड़ा स्कोर यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं। 7.89 का रन रेट। पहले बल्लेबाजी करने का ये फ़ायदा होता है, आप अगर बड़ा स्कोर खड़ा करें तो गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है उसे रोक पाना। और ऐसा लग रहा है कि सुपर जायंट्स बड़ा स्कोर ही खड़ा करेंगे आज। हालांकि मैच अभी बहुत बचा हुआ है, 11 ओवर तो इसी पारी में बचे हैं। देखना है कि किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। नीले की अगला ओवर, पहली गेंद, और एक बढ़िया शॉट डीप मिड विकेट की तरफ खेला, लेकिन वहाँ पर एक क्षेत्ररक्षक है। और बहुत बढ़िया यहाँ पर क्षेत्ररक्षण, 2 रन फिर भी ले लेंगे आराम से। ये देखिए ऊपर की गेंद थी और ऑफ स्टंप के बाहर से उसे खींचा डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। बढ़िया क्षेत्ररक्षण, अच्छी फील्डिंग कहेंगे इसे, थ्रो भी बेहतरीन। 2 रन मिल गए वहां पर पहली गेंद पर। अच्छी शुरुआत चेतन चापेकर की, 14 पर खेल रहे हैं, 16 पर खेल रहे हैं 17 गेंद के बाद। छोटी गेंद, लेकिन अंदर आती हुई गेंद, और 1 रन लिया लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर। सत्रह पर आ गए हैं चेतन 18 गेंदों के बाद, और आदित्य शिरोडकर 13 पर खेल रहे हैं 16 गेंदों के बाद। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा दोनों बल्लेबाजों को। आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथ में। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। यहाँ पर रन आउट हो जाते हैं। बहुत ही लचर क्षेत्ररक्षण, और आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर एक क्षेत्ररक्षक के तौर पर। ये देखिए तो इन्होंने हाथ का या मुंह ना लगा। दोनों बल्लेबाज लगभग एक ही क्रीज में थे, और खराब यहाँ पर क्षेत्ररक्षण। थोड़ा सा संयम बरतते तो विकेट कीपर की तरफ आराम से यहाँ पर आपको रनआउट मिल जाता है। ये देखिए आपको स्लो मोशन में दिखाएंगे, भागने का प्रयास, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी समर्थन नहीं था, और दोनों बल्लेबाज लगभग एक ही तरफ थे। देखिए बहुत खराब यहाँ पर एक चूक हुई है। बड़ा विकेट मिल सकता था आदित्य शिरोडकर का, हालांकि 1 रन हो गया अंततः। बढ़िया बल्लेबाजी, ऑफ स्टंप की तरफ शफल करके 2 रन यहाँ पर मिल जाएंगे। फाइनल की दिशा में खेला, और ये समझदारी से भरी बल्लेबाजी कहूँगा मैं इसे। चौके छक्के तो लगा ही रहे हैं, उसके बाद 1-1, 2-2 भी आसानी से ले रहे हैं। इस ओवर में गेंदबाजी भी अच्छी हुई है। 6 रन ही गए हैं अभी तक नीले के 4 गेंदों पर, लेकिन एक बड़ा शॉट अगर लगता है तो पूरा ओवर खराब होने का यहाँ पर
मौका बन सकता है। ये देखिए, ये लगता है हमारी कमेंट्री सुन के ही शॉट्स मार रहे हैं। वाह क्या बड़ा छक्का है, बेहतरीन शॉट डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। इस बार बड़ा शॉट खेला, आपको स्लो मोशन में रिप्ले दिखाएंगे। 6 रन के लिए चेतन चाफेकर फॉर्म में आ चुके हैं। अच्छी गेंद थी, फ्लाइट दी इस गेंद पर और क्या शॉट मारा है। वाह, यही हम यहां पर कह रहे थे कि एक बड़ा शॉट लगेगा तो पूरा ओवर यहां पर खराब हो जाएगा। 12 रन का हो गया है ओवर अभी तक, एक गेंद फिर भी बची है। देखिए बेहतरीन छक्का, बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं ये बल्लेबाज चेतन चाफेकर। बॉटम हैंड के धनी यहां पर, तगड़ा बॉटम हैंड है, बहुत ही ज्यादा सशक्त। और इस बार हवा में बेहतरीन शॉट, पॉइंट के पीछे से खेला। 4 रन मिलेंगे यहां पर भी। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं चेतन, वाह। और ये 10वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया है 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या बढ़िया शॉट खेला और अच्छी गेंदों को भी वो सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज की निशानी है। थोड़ा सा दबाव में थे शुरुआत में, उसके बाद जो वापसी की है चेतन ने, तारीफ करनी पड़ेगी। यहां पर कोई मौका नहीं क्षेत्र रक्षक के पास। ड्रिंक्स का निर्देश है अंपायरों का। 10 ओवर के बाद 87 पर 2, 8.7 का रन रेट। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है सुपर जायंट्स ने अभी तक। और एक छोटे से विराम के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। And we're back live with the English commentary. 10 overs have been bowled, 87 for 2. That's a wonderful start by the Super Giants after they elected to bat first. The captain won the toss. Vinod coming to bowl his second over. He's bowled a wonderful first over. Took a wicket as well. That's a good start by Vinod. Aditya Shirodkar playing it well towards the long off, just a single this time. And Vinod has a wonderful ability to keep bowling on that right spot. And that is the kind of bowler he is. Bowls like as if a machine is bowling.
Oh, and that's a short delivery played so well. That will be a boundary. What a shot that is by Chetan Chapekar. He's on fire, this guy. Just have a look at that shot. No chance for the short extra cover fielder. Brilliantly played away from him. And that was a no ball as well. So 5 runs off that delivery. Oh, and that's a big mistake by the captain of AS Global. Only 3 fielders inside the ring, and that is why the no ball was given. This is a real important point to be noted. You have to have 4 fielders inside the ring after the power play. Oh, and this time a good comeback by Vinod. So the free hit does not fetch them any run. In the air. Oh, and what a try that was by Vinod. He almost got him. Let's have a look at that replay. Just a single that time. He was trying to hit the big shot, Chetan Chapekar, but probably getting the edge there. Aditya back on strike. That's a good delivery. Not giving him the room and playing it back to Vinod. Aditya Shirodkar there. He's bowled a good over apart from that no ball and the boundary. Oh, and this time in the air. And he's gone. And that is why Vinod is such a dangerous bowler. He keeps on bowling that length. It's not easy for any batsman to keep hitting when he bowls within the stumps as well. What a wonderful piece of bowling that is. And that's a good catch by Amit, standing at the short third man. We'll show you the replay again. Let's have a look at that. Good catch by the short third fielder. And this is the 3rd wicket down. The Supergiants. Aditya Shirodkar, after playing a good hand, goes back to the pavilion. Could have been a better strike rate there, but he had a good partnership with Kedar Kango as well. Let me show the replay once again. That was a good catch taken and a wicket gone there. The 3rd wicket down. Priyank Tandon is a new batsman. He'll assume he'll take the strike. Beg your pardon there. Starts off well with a single towards the point region. And another successful over from Vinod comes to an end. 11 overs gone, 95 for 3. They need to have Chetan Chapekar in their kitty if they want to restrict the score. They're cruising at the moment, Supergiants. Almost 9 runs and over.
8.64 to be exact. Sandy is the new bowler. Starts off well there with a dot. This is his first over. So Sandeep Gadiyar, properly known as Sandy. And he drifts down the leg side this time on the pads and should be a boundary. That's not a good delivery. He's a wonderful bowler, this guy, but this time drifting down the leg side and a boundary scored there. I'll show you the replay once again. Sandeep Gadiyar. It's a good shot played by the batsman. Oh, that was leg by, signaled by the umpire. Priyan Tandon. Oh, comes down the track and that's a wonderful work by the wicket keeper. Almost had him there. Just have a look at that. A good delivery, a good comeback by Sandy. Another good delivery, but a quick single taken this time. There's a mid wicket who stops the ball, and that's the 100 up for Supergiants. This is just the 12th over, and just look at the run rate there, 8.57. Wonderfully played there by this team till now. All the batters have tried and contributed wonderfully well. Sandy coming to bowl is next, and that's the line you want to bowl to Chetan Chafekar. That's a dot delivery. That's a wonderful piece of bowling. Another good delivery, and that's the end of his first over. So the 12th over has been bowled. The score is 100 for 3. And this was a good over by Sandeep Gadiyar. Came back nicely after giving that boundary of the leg by. Just one run after that and 3 dot deliveries. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Vinod coming to bowl his third over. He's bowled brilliantly. It has taken 2 wickets as well. This time bowls on the leg stump. A single taken. Played well towards the backward square leg for a single.
Chetan Chapekar is the key here for Supergiants. He's played a wonderful knock till now. .34 of just 26 deliveries. Vinod to Chetan. Oh, and that's a good shot again this time. Playing it towards the deep backward square leg could be an easy couple there. They take 2 runs easily. Oh, and he's cleaned him up. Wow. Vinod is on fire and they've got the big fish here. Chetan Chapekar trying to hit the big shot. Oh, and he's missed it completely. And Vinod says, "You miss, I hit." Wow. Absolutely stunning work there. And he's got the big fish here. Chetan playing a wonderful innings but goes back to the pavilion now. And the 4th wicket down at a very crucial stage. 103 for 4. Just have a look at that replay. Trying to play the big shot. Missing it completely. That was a good innings by Chetan. That was such an important wicket. Vinod is on fire. This is his 3rd wicket. And as usual, he's amongst the wickets this time as well. Oh, and he almost got the 4th one as well. All these bowlers from Ace Global have bowled seriously well today. Chandrasekhar is the new batsman. And the first delivery was a peach to him. Oh, and this time he creates room for himself and a quick single taken. The fielder that covers does well there. Charles, the captain of Ace Global. Beg your pardon. Ketan is the captain for Ace Global. Vinod coming into bowl his last delivery in this over. That's a good delivery and no run taken this time. That's a good over. A very successful over by Vinod. And he's got into a lot of wickets here. 3 wickets he's already taken for himself. 3 overs and 3 wickets. Wow. Just 4 of that over. 104 for 4 after 13 overs. And Ketan would be a happy man, the captain. He utilized Vinod really well here. He's taken some really important wickets in the top and middle order.
A good start to the over by Sandeep Gadiyar. Sandy. Oh, and this time it should be a wide. It's a wide. Single by the umpire. Wide outside that off stump, and no hesitation by the umpire in declaring that a wide. This time it's played well towards the deep backward square leg. Should be a couple easily. A good chase by Vinod, but couldn't prevent the second run. So Chandrasekhar getting into the act now, trying to score some quick runs. They still have Kishore Hande in their lineup, waiting for his turn. And he's a big striker of the cricket ball as well. So good lineup for Supergiants in this TSL. Sandeep Gadiyar coming into bowl his next delivery. Sandy, as he is famously known in his group. That's a good one again. A single taken quickly. Oh, and what a delivery. And a quick single taken again. That was a very good delivery, but a quick single taken, and that's what they want. They want the strike to be rotated. Continuously, and that is what is happening. They're rotating the strike almost on every delivery. That's a good shot again, this time towards the sweeper cover. Is there a fielder out there? And this will be a boundary. Wow, what a shot that is. That was the perfect gap. There was a fielder at sweeper cover, but he hit it wide of him. Brilliantly played by Chandrasekhar, and what a wonderful piece of work there by the batsman. I'll show you the replay once again. The fielder tried his best as well, but that's a boundary. Oh, and that was a good effort, a valiant effort by the fielder. Another boundary, and that was a much needed boundary. They were silent from a long time since Chetan got out. That's a wonderful delivery to come back. And that's the end of his second over. The score after 14 overs is 113 for 4. We take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Ketan with his next over. That's a good shot by Priyank Tandon. Just a single this time. The long on does well.
Oh, and that's a good shot this time. A short delivery, played well towards the boundary. That's a wonderful shot. 4 runs there. Let's have a look at the replay. No chance for the fielder at long on. That was played really straight and a lot of bottom hand power behind that shot. Chandrasekhar contributing really well. Already on 12 of just 8 deliveries. Another good shot played towards the long on, just a single this time. Ketan bowling well there. After being hit for a boundary, comes back nicely. Oh, and this time pitched up, and that's a good shot, but straight to the fielder there. That covers, does well. No run taken, and that's a dot delivery. What a shot that is. Could be a big one. Probably the best shot of the innings today. Absolute brilliance there by the batsman Priyank Tandon. A short delivery, and just have a look at that. That's a short arm jab. What a shot towards the deep mid wicket. No chance for the fielder. Just a spectator there. Watching the ball sail over the ropes. And he's got some really solid bottom hand. What a shot that was. A treat to watch. We'll show you the replay once again. Oh, and just have a look at how he picked it from outside the off stump. A flat 6 and a short arm jab from the batsman Priyank Tandon comes into the act. His first boundary. That to a huge 6. He plays it well towards the square leg. Should come back for the second as well. The first one taken quickly, but this time they decide against it. Sandeep Gadiyar does really well. Comes running from the square leg boundary and allows only a single to happen. That's the end of the 15th over. And the score is 126 for 4. Allow me to switch to the Hindi commentary now. We'll take a quick break and be back soon with the Hindi commentary. Stay tuned, viewers. Oh, and Vinod coming into bowl his last over. Starts off with the wide, and allow me to switch to the Hindi commentary. विनोद का आखिरी ओवर ये इनके स्पेल का चौथा ओवर. बेहतरीन गेंदबाजी की है. 3 विकेट ले चुके हैं और 15 ओवर के बाद स्कोर 127 पर 4. प्रियांक टंडन ने क्या शॉट खेला था पिछले ओवर में. आपको एक बार रिप्ले दिखाएंगे फिर से उसका. बढ़िया शॉट इस बार मिड विकेट की तरफ और 2 रन के लिए वापस आ रहे हैं. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स और यहाँ पर बढ़िया क्षेत्ररक्षण भी. इन 2 रन रोक नहीं पाए संदीप गडियार. और ये देखिए क्या बेहतरीन शॉट लगाया था. वाह, अद्भुत बल्लेबाजी कह सकते हैं हम इसे. स्टंप के बाहर की छोटी गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ 6 रन के लिए भेज दिया. बढ़िया शॉट और यहां पर चूक हुई क्षेत्ररक्षक से, लेकिन लॉन्ग ऑफ मौजूद है. 1 ही रन मिलेगा.
एक्स्ट्रा कवर रोक सकते थे, अगर रोक लेते तो शायद एक भी रन नहीं होता। विनोद का आखिरी ओवर ये, बेहतरीन गेंदबाजी की है अभी तक और कमर तोड़ के रख दी है। बल्लेबाजी क्रम की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट झटके उन्होंने चंद्रशेखर स्ट्राइक पर। और ये बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन एक एक रन से बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ बड़े शॉट्स भी खेलने होंगे। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही सक्षम बल्लेबाज हैं बड़े शॉट्स खेलने में, लेकिन विनोद को मारना इतना आसान नहीं है। बढ़िया शॉट इस बार, गैप में खेला हुआ शॉट, 4 रन। प्रियांक टंडन बेहतरीन फॉर्म में, कवर्स के ऊपर से क्या बेहतरीन शॉट खेला। आप देख लीजिए, फुल टॉस गेंद थी और उसको पूरी तरह भुनाया। कोई मौका नहीं वहां पर लॉन्ग ऑफ फिर क्षेत्र रक्षक के लिए। 4 रन। प्रियांक की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अचानक से ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत आक्रामक हो गए हैं। बढ़िया शॉट, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, सिर्फ एक ही रन मिलेगा लॉन्ग ऑन की दिशा में। छोटी गेंद, बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार फिर क्षेत्ररक्षक के हाथ में, एक ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति 137 पर 4, 16 ओवर के बाद। और डेथ ओवर्स में हम लोग आ गए हैं, धनराज आए हैं और ये पहली गेंद बहुत बेहतरीन। बढ़िया शुरुआत धनराज की और पहली गेंद पर लग रहा था कि विकेट ले लेंगे।
शायद हल्की सी चोट लग गई थी वहां पर इस बाउंसर से बल्लेबाज को, उसने अपना समय ले रहे थे। बढ़िया शॉट। क्या यहाँ पर एक से ज्यादा रन होंगे? जी नहीं, एक ही रन होगा। दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं और रन आउट का यहाँ पर मौका है, लेकिन 2 रन ले लिए। खराब क्षेत्र रक्षण है ये, और धनराज जरा भी खुश नहीं इस तरह के क्षेत्र रक्षण से। इस बार चूक गए अपने रनअप में, शायद वापस जाना पड़ेगा इस गेंद को डालने के लिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है, गेंदबाज अपनी स्टेपिंग खो देते हैं, शायद इस बार वैसा ही हुआ। धनराज बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, उच्च स्तरीय गेंदबाजी कर रहे हैं, और तेज़ तो हैं और बाउंस का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कंधे का प्रयोग, उछाल लेते हैं पिच से। एक और अच्छी गेंद इस बार। एक रन लिया आसानी से। प्रियांक टंडन वापस स्ट्राइक पर। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रियांक, और ये खराब गेंद वाइड होगी। जी हाँ, थोड़ा सा भी यहाँ पर मुश्किल नहीं होगी अंपायर को वाइड देने में। बहुत ही खराब गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के बहुत बहुत बाहर। सत्रह ओवर चल रहा है, 141 पर 4 का स्कोर आ गया है। अभी भी 21 गेंदें बची हैं, आसानी से चाहेंगे 180 तक पहुंचना। बढ़िया गेंदबाजी, सीधे पॉइंट के क्षेत्र रक्षक के हाथ में। आदित्य ने बढ़िया क्षेत्र रक्षण किया और एक ही रन दिया वहां। बेहतरीन गेंदबाजी, एक रन लिया। बढ़िया शॉट खेला, दूसरे के लिए आना चाहेंगे, लेकिन एक से ही संतोष करना पड़ेगा। संदीप गडियार वहाँ पर बेहतरीन क्षेत्र रक्षण करते हुए। बहुत ही उच्च स्तरीय क्रिकेट हो रहा है। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण भी बहुत ही ऊंचे दर्जे का। बढ़िया गेंदबाजी और इस बार ये आउट। बहुत बढ़िया, यहां पर ये कैच लपका है पॉइंट के क्षेत्र रक्षक आदित्य ने, और ये बड़ा विकेट मिला है। आप देख सकते हैं यहां पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास आगे बढ़कर, लेकिन धनराज को ऐसे खेल पाना आसान नहीं है। और क्या कैच लपका है यहाँ पर। तारीफ तो मैं आदित्य की करना चाहूंगा, धनराज की तो बेहतरीन गेंदबाजी होती ही है। ये देखिए, संयम बरता और बढ़िया कैच लपका। वाह, स्लो मोशन में देखेंगे रिप्ले एक बार। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं धनराज, जैसा कि हमने पहले भी बोला उच्च स्तरीय गेंदबाज हैं। ये देखिए, पॉइंट पर लपक लिया आदित्य ने, और ओवर की समाप्ति एक सफल ओवर 143 पर 5 17 ओवर के बाद। और प्रियांक टंडन की बेहतरीन पारी, 21 रन की पारी समाप्त हुई। बहुत बढ़िया उन्होंने पारी खेली प्रियांक टंडन। ये शॉट भी बड़ा शॉट मारना चाह रहे थे, हालांकि आउट हो गए। नए बल्लेबाज विनय बोथरा आए हैं, हालांकि ओवर की समाप्ति हो चुकी थी। तो चंद्रशेखर स्ट्राइक पर रहेंगे, 19 रन पर खेल रहे हैं 15 गेंदों पर। संदीप गडियार, बेहतरीन शॉट, 4 रन, और इस पर छाप थी चौके की जैसे बल्ले पर यह गेंद आई थी।
क्या शॉट खेला है, वाह। सीधे खेला, सीधे बल्ले से खेला, और वाह, मजा आता है ऐसा ऐसे शॉट्स देखकर। तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज की। यहां पर चंद्रशेखर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको रिप्ले दिखाएंगे। सीधे खेली इस गेंद को, और कोई मौका ही नहीं। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन क्षेत्र रक्षकों के पास। और इस बार एक और बेहतरीन शॉट स्कूप किया 4 रन के लिए। चंद्रशेखर फॉर्म में है, और देखिए क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर आए, और वहां पर एक शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र रक्षक था, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। और इसी के साथ 150 भी पूरे होते हुए 150 रन बना लिए यहां पर सुपर जायंट्स ने। 18वां ओवर ही चल रहा है, एक बड़े स्कोर की दिशा में अग्रसर होते हुए। 151 पर 5 स्कोर है। और क्या शॉट खेला चंद्रशेखर ने। 2 बेहतरीन चौकों से इस ओवर की शुरुआत की है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। एक और बढ़िया शॉट, ये भी चौका हो सकता है। 4 रन, वाह। जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम। और इस बार डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर को चुना। पैरों पर गेंद थी, पैड्स पर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। अद्भुत बल्लेबाजी है ये, अविश्वसनीय बल्लेबाजी, अकल्पनीय बल्लेबाजी। चंद्रशेखर इस मैच का रुख पलट रहे हैं। एक बड़े स्कोर की तरफ अपने दल को ले जा रहे हैं। 155 हो गए हैं 5 विकेट पर अब। और इस ओवर में 12 रन बन चुके हैं, 3 गेंदें हुई हैं, वाह। क्या ये भी चौका होगा? 3 चौके लगा चुके हैं इस ओवर में। संदीप की अगली गेंद, बड़ा शॉट इस बार, लेकिन क्या यहां पर कैच हो जाएंगे? और ये 4 रन। एक बार फिर से 4 चौके लगा दिए 4 गेंदों पर, वाह। तारीफ करनी होगी। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं संदीप गडियार के। समस्त बॉलिंग स्टैट्स को इन्होंने धराशायी कर दिया यहां पर। 4 गेंदों पर 4 चौके, वाह। इस बार ऊपर की गेंद थी, सीधे खेला उसे। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक के पास कोई भी मौका नहीं। संदीप की 5वीं गेंद, और ये बेहतरीन वापसी। बेहतरीन वापसी कहूंगा मैं इसे। डॉट गेंद 16 रन देने के बाद 4 गेंदों पर। और ये आखिरी गेंद, कैच हो जाएंगे क्या? ये जी नहीं, 4 मिलेगा। क्या बल्लेबाजी है। 5 चौके इस ओवर में। जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। अद्भुत बल्लेबाजी चंद्रशेखर की। आगे बढ़कर खेला, इस बार भारी किनारा अवश्य लगा, लेकिन गैप में गई गेंद। और 5 चौके इस ओवर में। 3 हो गए हैं संदीप के लिए, सबसे महंगा ओवर उनका। और स्कोर हो गया है 163 पर 5 18 ओवर के बाद, वाह। और इस बार हवा में खेली एक शॉट, और 2 रन मिल जाएंगे। विनय बोथरा ने अपना खाता खोला। धनराज का यह आखिरी ओवर। एक छोटी गेंद का इशारा अंपायर क्या कंधे के ऊपर डाल सकते हैं धनराज, उन्होंने डाल दी गेंद। धनराज की अगली गेंद, चंद्रशेखर। विनय बोथरा स्ट्राइक पर, और ये आउट। बेहतरीन गेंदबाजी। और इस बार स्लोअर गेंद डाली, धीमी गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी आप देख सकते हैं।
और मिडिल स्टंप उखाड़ दिया विनय बोथरा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रन नहीं बना पाए, लेकिन शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी। और ये छठा विकेट भी गिरता हुआ सुपर जायंट्स का 164 पर। बढ़िया गेंदबाजी, किशोर हांडे आए नए बल्लेबाज। धनराज बेहतरीन गेंदबाज हैं और किशोर हांडे भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। और ये बड़ा शॉट 6 रन। क्या ये छक्का है? देखना है ये। जी हाँ, बड़ा शॉट खेला है किशोर हांडे ने, तारीफ करनी होगी इनकी। ये स्लोअर गेंद डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या जवाब दिया है वहां पर किशोर हांडे ने। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन के लिए भेज दिया गेंद को। तारीफ करनी होगी। आप देख सकते हैं सुडौल शरीर के धनी हैं ये, जबरदस्त भुजाएं हैं इनकी, और बॉटम हैंड से तो क्या ताकत लगती होगी। वाह, क्या बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। आपको रिप्ले दिखाएंगे। ये देखिए, बहुत बड़ा शॉट 6 रन। अब वापस लाइव आते हैं और इस बार बेहतरीन यहां पर वापसी और तेजी से रन लेने की कोशिश, और सफल भी हो गए चंद्रशेखर। वाह, और धनराज जैसे गेंदबाज को छक्का मारना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ही जबरदस्त उच्च स्तरीय गेंदबाज हैं धनराज, लेकिन किशोर हांडे ने भी दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं है। और ये देखिए, बड़ा शॉट खेला 6 रन के लिए। वाह, धनराज की अगली गेंद। वापस लाइव आ चुके हैं हम। बढ़िया शॉट चंद्रशेखर का। क्या ये चौका होगा? जी नहीं, यहां पर क्षेत्र रक्षक की जबरदस्त फील्डिंग, सिर्फ एक ही रन दिया और एक अच्छे ओवर की समाप्ति। और धनराज का स्पेल खत्म होता हुआ 2 विकेट लिए उन्होंने। बेहतरीन गेंदबाजी डाली है और 19 ओवर के बाद स्कोर 172 रन। जैसा कि हमें लग रहा था 180 के आसपास स्कोर जाएगा, ऐसा लग रहा है आपकी इस ओवर में 15 रन तो चाहेंगे कम से कम, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और चंद्रशेखर की यहाँ जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्या बल्लेबाजी की है। और संदीप गडियाल के पिछले ओवर में तो उन्होंने ताबड़तोड़ 5 चौके लगा दिए थे। 40 पर आ गए सिर्फ 22 गेंदों के बाद। वाह, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट। और इससे बढ़िया तो क्या ही बल्लेबाजी हो सकती है। बेहतरीन बल्लेबाजी, जितनी भी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ये संदीप का आखिरी ओवर। बढ़िया शुरुआत। चंद्रशेखर ने 1 रन लिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और किशोर के पास दारोमदार है। किशोर के ऊपर दारोमदार है कि किस तरह से वो 5 गेंदों को भुना पाते हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, आप देख सकते हैं। बढ़िया गेंदबाजी। और ये वाइड है क्या? जी नहीं, अच्छी गेंदबाजी। यहां पर
चकमा दे दिया बल्लेबाज को। तारीफ करनी होगी यहाँ पर संदीप गडियार की। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करने चाह रहे थे, लेकिन ये देखिए किस तरह से अगली गेंद संदीप गडियार की। 173 पर 6 स्कोर। बढ़िया शॉट, अच्छी गेंद थी लेकिन बेहतरीन शॉट। और ये क्या स्वीपर कवर की तरफ जा रहा है। जी हाँ, दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं और यहाँ पर रन आउट की कोशिश, लेकिन 2 रन हो गए। बहुत बढ़िया यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तेज धावक हैं ये दोनों बल्लेबाज। आप देख सकते हैं अच्छा वहाँ पर प्रयास स्वीपर कवर के फील्डर का। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लेकिन फिर भी 2 रन नहीं रोक पाए। संदीप गडियार की 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बने हैं। बहुत ही बेहतरीन आखिरी ओवर जा रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत जुड़ेंगे आपके साथ वापस। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अगली गेंद, बढ़िया गेंदबाजी। इस बार भी दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे। जी हाँ, किशोर हांडे और चंद्रशेखर की बेहतरीन रनिंग। 2 रन आसानी से ले लिए और तारीफ करनी होगी चंद्रशेखर की। अपने दल के लिए खेल रहे हैं, खुद की बल्लेबाजी पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाहे तो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन किशोर क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन ये स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दिखाई है चंद्रशेखर ने। किशोर हांडे भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और एक बड़ा छक्का लगा भी चुके हैं। और चंद्रशेखर को पता है कि पर बड़ा शॉट मारने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी और बढ़िया शॉट। क्या ये चौका होगा? जी हाँ, 4 रन, बेहतरीन शॉट और 181 हो गया स्कोर। तो जैसा हमने सोचा था कि 180 के पार करेंगे, कर दिया है। क्या शॉट लगाया वहां पर, डीप कवर पे कोई था नहीं। और एक आखिरी गेंद बची है संदीप गडियार की। अच्छा ओवर डाला है अभी तक इन्होंने। सैंडी इनका चौथा ओवर ये। इस ओवर में भी 9 रन दे चुके हैं अभी तक, लेकिन पिछले ओवर में जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई थी इनके चंद्रशेखर के द्वारा, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, बहुत समय तक याद रखी जाएगी इस तरह की बल्लेबाजी चंद्रशेखर के द्वारा। 41 पर हैं 23 गेंदों पर। आखिरी गेंद किशोर हांडे आगे बढ़कर खेला, उसे सिर्फ एक ही रन होना चाहिए, दूसरे के लिए आना चाह रहे हैं। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत खराब क्षेत्र रक्षण में कहूंगा, लेकिन रन आउट हो गए हैं। रन आउट हो गए हैं यहाँ पर। और ये 20 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 182 रन। शायद एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। एक 182 पर 7 20 ओवर के बाद और आखिरी गेंद पर 2 रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर संदीप गडियार की। थ्रो अच्छा नहीं था। ये देखिए आखिरी गेंद कैसे खेली उन्होंने, और बढ़िया थ्रो नहीं था। ये देखिए कहां पर थ्रो किया था, लेकिन उसके बावजूद संदीप गडियार ने पूरा अनुभव दिखाया अपना वहां पर और रन आउट किया। और सुपर जायंट्स 182 पर 7 के स्कोर के साथ 20 ओवरों के बाद एक बढ़िया स्कोर खड़ा कर चुके हैं। और 183 चाहिए एस ग्लोबल को इस मैच को जीतने के लिए। करीबन 10 मिनट के बाद आपके साथ वापस जुड़ेंगे दूसरी पारी के लिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।
We welcome you back to the second innings. We are back live in this TSL match between the Ace Global and the Dynamic Supergiants. And the Dynamic Supergiants have scored 182 in their 20 overs. Ace Global have their work cut out here, 183 to win. We've got the first delivery coming in. And what a shot that is! Right in from the meat of the bat and a boundary on the first delivery. Wow, what a start by the batsman. Just have a look at that. Brilliantly played. Absolute stunner there by the batsman. Amazing batting this is by the opening batsman. The first delivery smashed for a boundary. We'll show you the replay there. Just have a look at that. That was pitched up. And brilliantly played. Wow. That's the stamp of authority. And it took less than 2 seconds for the ball to go to the boundary. This time trying to cut that, Jfsc Tsl. Priyank Tandon coming back nicely with that delivery. And he's a solid batsman, this guy, Jfsc Tsl. Playing TSL for the first time, and he's a class act. A really, really dangerous batsman. And that's a good delivery by Priyank. Trying to hit it over the bowler's head, but that was a good yorker in the block hole. Changing his bat, probably hitting the toe end, and don't know whether he's broken his bat or not. We'll take a quick break and be back soon. That's a good start by the Ace Global. Oh, and this time he picks it up brilliantly, pulls it towards the deep square leg, could be another boundary. What a shot that is. Brilliant start by Jfsc Tsl, and that was a wonderful shot. Just have a look at that, picks it up from outside the off stump. Brilliant shot by Jfsc Tsl. He's on fire. Just have a look at that. What a shot that was, and a dangerous batsman. To have in your lineup. That's a wonderful start. Priyank coming to bowl his next delivery. That's a good delivery. A low full toss and played towards the end of the first over. So very good start by both the teams. This match is going really well here at the Fatima Cricket Grounds. 8 runs of the first over. What a start by Jfsc Tsl. 2 wonderful hits. And 8 runs scored of the 2 boundaries that he played so well in the first over. Score is 8 without loss after the first.
Vinay Bothra coming to bowl his first over. He'll share the new ball with Priyank Tandon. On strike is Ketan, the captain of the Ace Global team. The first delivery from Vinay. And that's a good one. Ketan plays it nicely towards the covers fielder. The short cover in place there for the catch. Yep, is shot. Starts off with a dot. It's a good start by Vinay. Vinay with his next delivery. Oh, and that's a good delivery, played well by Ketan as well, and a quick single taken by Jitesh Puravia. He's a very, very quick runner between the wickets, this guy. Ketan off the mark with a good shot. A single taken there. Vinay Bothra starting off well. He's a wonderful cricketer, a genuine all-rounder, Vinay. Oh, and this is a poor delivery. And the keeper misses that. So 2 runs would be added to the tally. That's a wide. Missing the line completely there. Just have a look at that. Replay. Oh, and this time missing it. And Ketan back on strike. Vinay coming into bowl his next delivery. Sir, really sorry. Huh? Another wide this time. Should be another couple of runs. The keeper doing well there. Getting the glove at the right time. And he's missing the trick here. Vinay Bothra probably not able to control the line there for the second time in a row. So 4 runs added to the tally just because of extras. They will have to keep a check on that. They have a good score, but the Ace Global have got a really good batting lineup here. And this guy Jitesh Puravia, if he stays for long, it will be trouble for the bowlers. That's a good delivery, played well as well. Could be an easy couple there. The fielder chasing it towards the deep square leg. And good work there by both the fielders in tandem. But he's such a thinking cricketer, Jitesh Puravia. That was a good delivery, but he played it with soft hands towards the deep square leg for a couple. A busy player, Jitesh, already on 10 of just 7 deliveries. Should be a wide. It's way outside that off stump line. Jitesh was already coming down the track to hit a big one. Oh, another wide. So the keeper missing that again. 3 times this has been repeated in this over. 2 runs taken again. So 3 wides in this over and 3 extra runs as well. So 6 runs and 3 deliveries he'll have to bowl. So he needs to hold the right line. These runs could be costly in the context of this match, context of this chase. And Vinay's over has been expensive till now. Already 10 of this over of just 3 deliveries. That's a wonderful shot this time by Ketan, and could go all the way to the boundary. The fielder chasing it and probably will stop it just before the boundary. That's a very good chase, and 3 runs have been taken. This is really good running between the wickets by these two. What a start that is by the Ace Global. Just the second over and they're already at 21 without loss. This is a poor over, poor start by Vinay Bothra to his spell. Has already given 13 runs, just 4 deliveries. He needs to come back with some good deliveries. Probably needs to take a wicket to compensate for the runs that he's given. But Jitesh Puravia is in a different mood altogether, it seems.
Oh, that's a wonderful shot. Comes down the track. Could be another boundary. And what a player this guy is. This is a boundary for sure. He is on fire right from the word go. Just have a look at that. Dances down the track of boundary there. Just walks a couple of steps towards the bowler and hits him for another boundary. 17 of that over already. A very expensive over. 25 without loss. What a start by Ace Global. This is the last delivery of the second over. Jitesh on strike. Oh, and this time played really well. This will be a boundary again. He's such a wonderful batsman, this guy. What a start. 21 of that over. That's a very expensive over. And just have a look at the replay there. That is a classic shot by a really, really strong batsman here. Jitesh Purabia is on fire. He's already on 18 of just 9 deliveries. A strike rate of 200 already for him. And the score after 2 overs is 29 without loss. What a start by Ace Global to this chase of 183. 14.5 is the current run rate. And just have a look at that contribution by Jitesh Purabia. 18 of just 9 deliveries. Wow. If you have such batsmen at the top, it becomes really difficult for the bowlers to bowl. And Ketan is also playing quite well. Both these players started off brilliantly. What a start by Ace Global to this chase. They have to score 183 and they've started off in grand fashion. 29 of just 2 overs. Still the opening pair alive there. Priyank Tandon coming to bowl his next over. He's bowled well in the first over apart from the 2 boundaries that he was hit for, but they were good shots. Oh, and he starts off with a wide again. So missing the trick there. The opening bowlers. A lot of extras being given here. 30 already on the board after just 2 overs. And they need to bowl around the off stump. Somebody needs to tell them. The captain needs to go there. Just have a word with his bowlers. Ask them to take their time, and they're good bowlers. It's just that a wonderful start from Ace Global probably has put them under pressure. That's a good ball. Trying to pull that straight to the mid on. But that was a good delivery. That's a good comeback by Priyank. Just have a look at that replay. Oh, and that was not from the meat of the bat. These are the chances that they will have to create for themselves. Oh, and that's a wonderful shot. But there's a fielder out there. Just a single. The sweeper does well. Priyank with his next delivery. Oh, and pulled brilliantly this time. Will that be a boundary? And is that a 6? We'll have to just look at the umpire's decision here. It seems this is a huge 6. Wow, he's on fire, this guy. Absolutely stunning piece of work there by Jitesh Purabia. What a shot that was towards the fine leg. A poor delivery and hooked wonderfully well. That was the hook shot. Jitesh Purabia. Oh, another wide, and they're definitely losing track of the line here. This is not the kind of start bowlers would be wanting. What a shot that was by Jitesh. Oh,
and this time a good delivery. A good comeback by the pacer. And that is the line that he needs to bowl. Any batsman would be vulnerable in the start of his innings if you bowl him in the corridor of uncertainty. That is what is required by the pace bowler. We'll show you the replay once again of that huge six that he hit. What a shot that was. You can't bowl that to him. He's so good on the onside. Oh, and that's the delivery that he wanted to bowl. And this time he's appealing for a caught behind. That was a real moment in the match. It seems the umpire just not interested and did not seem to have any edge there. Probably Priyank was hoping there that the edge would be given an out, but that was no edge, so don't know why he was so animated after the ball went to the keeper's gloves. Coming into bowl his next delivery. Oh, what a shot that is. Could be another big one. Oh, and he's dropped it. Should have been caught, but he drops it. Just have a look at that. Pitched it up and long off was placed specifically for that shot, and he's dropped it. So Jitesh Purabia gets a life, and that's the end of the third over. A very expensive over again. The score after 3 overs is 39 without loss. Started off so well. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. .39 for 3. Kishore Hande being introduced into the attack. The spinner. He's a genuine all-rounder. Hit some really important runs towards the end of the first innings, and now he's been handed over the responsibility to bowl some good overs. But Jitesh Purabia seems to be in an altogether different mood. Slightly lucky he was dropped in the last over by the long off fielder. Oh, and what a start by Kishore Hande. A brilliant leg spinner there by the bowler. Jitesh was completely beaten and had no idea about that delivery. Brilliant start by the leg spinner. Oh, another good delivery this time, and Jitesh making room for himself, trying to hit that towards the deep backward square leg. Just have a look at that. Not succeeding, did not connect at all. Oh, and that was so close to the off stump. This is good bowling by Kishore. Coming to bowl is next. Another good delivery, and this time plays it straight to the point field and no run taken. So 3 good deliveries to start his spell. 3 dots. Oh, and that's a wonderful shot. This time will be a boundary. You can't bowl that to him. He's so quick off his feet. What a shot that was. Just have a look at that. Played wide of the point fielder. Oh, and no chance for the fielders out there. Race to the boundary in a flash. Wonderful piece of batting by Jitesh Purabia. He's on fire, this guy. And that is why you should not be dropping catches of players like him.
This could be really costly in the context of this game. That drop catch was definitely not an easy one, but should have been taken at this level. It was straight into the hands of the fielder at long off, and now he's making them pay. Another good delivery. That's a good comeback by the bowler. Coming to bowl the next. That's a good delivery, played well as well. And the mid-off does well, no run taken. That went quickly to mid-off. That's a good over by Kishore. And the score after 4 overs is 43 without loss, just a boundary in that over. So he bowled a good over, Kishore Hande, and that too to Jitesh Purabia. And that's a wonderful start. Just have a look at the current run rate, 10.75 runs an over. 4 overs, 43 balls start, similar to the start that Supergiants had when they were batting first. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Chandrasekhar coming to bowl his first over. Ketan on strike, and just have a look at the difference in the scores. Jitesh 29 of 19 and Ketan 5 of 5. So the bulk of the strike has been taken by Jitesh, and this time in the air, plays it uppishly. That's a wonderful shot and just a single. That was a good effort by the fielder. Chandrasekhar starting off well, almost got a wicket there. That was played uppishly, but not the way he would have wanted. Oh, and that's a good delivery again. Another good delivery, a dot this time. Trying to take the quick single, but Ketan says no. Wonderful piece of bowling by Chandrasekhar. This time a short delivery pulled well towards the deep square leg. Should get at least a couple. Does get a couple. Oh, this time played wonderfully well towards the deep mid wicket. Should get a boundary here. Will get a boundary. He's on fire, this guy. Just have a look at that shot. A short delivery, and he made room for himself. Shuffled across the off stump. Did such a wonderful shot. Another boundary by Jitesh Purabia. He's on fire.
And the 50 is up with that shot in just the 5th over. It has been a good over till now, but the boundary ensures that the 50 is reached in just the 5th over. And a quick single taken to end the over. So 5 overs have been bowled, 51 without loss. And a leg by signal by the umpire. And we'll take a quick break and be back with the Hindi commentary for the next few overs. Stay tuned, viewers. पांच ओवर में 51 रन। किशोर आंडे आए अपना दूसरा ओवर लेकर। जितेश पुरभी आगे बढ़े और 1 रन लेंगे तेजी से मिड ऑफ पर। अच्छा क्षेत्र रक्षण। और हम वापस आ गए हिंदी कमेंट्री के साथ। बेहतरीन शुरुआत एस ग्लोबल के बल्लेबाजों के द्वारा। सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। खास करके जितेश की तारीफ करनी होगी। 36 पर आ गए हैं सिर्फ 25 गेंदों के बाद। क्या बल्लेबाजी हुई है, वाह। चेतन डटे हुए हैं साथ में। 6 ही रन बनाए हैं अभी तक, 6 गेंदें मिली हैं। खैर ये 6ठा ओवर चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा शॉट खेलने का प्रयास यहां पर। और ये 4 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी केतन के द्वारा। और ये देखिए ऊपर की तरफ डाली हुई गेंद लॉन्ग ऑफ से दूर खेला 4 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी है, तारीफ करनी होगी इनकी। अगली गेंद बढ़िया गेंदबाजी और एलबीडब्ल्यू की अपील यहां पर, लेकिन 1 रन तेजी से ले लिया। क्या जबरदस्त यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स है। जितेश पुरभिया बहुत ही तेज धावक हैं। उन्होंने केतन को यहां पर 1 रन के लिए धकेला और केतन ने भी जबरदस्त तरीके से समर्थन दिया। बढ़िया गेंदबाजी और बेहतरीन शॉट और आराम से यहां पर 2 रन हो जाएंगे। क्या पता चौका मिल जाए। जी हां, 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं जितेश पुरभिया। ये देखिए आगे आकर खेला। डीप कवर लगाया हुआ था लेकिन इस बार स्वीपर की तरफ खेल दिया 4 रन के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी और स्लो मोशन में दिखाएंगे आपको ये रिप्ले। आगे आए, किस तरह से पढ़ते हैं गेंदबाजों को, तारीफ करनी होगी इनकी। जितेश पुरभिया जबरदस्त बल्लेबाज और 40 पर आ गए हैं देखते ही देखते। स्कोर आ गया 61 रन पर सिर्फ 6ठे ओवर में। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। और इस बार बैकफुट पर जाके कट किया, वापस एक चौका। क्या बल्लेबाजी है, वाह। अद्भुत बल्लेबाजी जितेश पुरभिया की। खराब गेंद नहीं थी लेकिन क्या शॉट खेला है। और ये ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद स्कोर है 69 रन। ग्यारह रन से भी ज्यादा का रन रेट है इस समय। जितेश पुरभिया की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। एक गेंद बची है, माफ कीजिएगा। 65 रन स्कोर है। 2 चौके लगा चुके हैं पिछली 2 गेंदों पर। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी और 1 रन के लिए आना चाह रहे थे लेकिन मना किया केतन ने। सही निर्णय।
6 ओवर के बाद 65 रन बिना किसी नुकसान के, लगभग 11 रन प्रति ओवर का रन रेट, और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जितेश पुरबिया 44 की ताबड़तोड़ पारी खेल चुके हैं सिर्फ 28 गेंदों पर। राहुल मात्रे आए हैं नए गेंदबाज। स्ट्राइक पर केतन, बेहतरीन शुरुआत यहां पर, 1 रन दिया आसानी से। राहुल मात्रे की अगली गेंद, बाएं तक गेंदबाज है, बेहतरीन गेंद, और ये बच गए। इस बार आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर राहुल ने चकमा दिया। अच्छी गेंदबाजी, आप देख सकते हैं किस तरह से चकमा दिया। और भाग्यशाली थे कि गेंद घूमकर विकेटकीपर के हाथों में नहीं आई, स्टंप आउट हो सकते थे। और ये बेहतरीन बल्लेबाजी, इस बार 4 रन मिलेंगे यहां पर। क्षेत्ररक्षक की एक कोशिश लेकिन किसी काम की नहीं, ऑफ स्टंप के बाहर आकर इस बार जगह बनाई, और क्या शॉट खेला है 4 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं जितेश पुरबिया, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। और स्कोर देखिए 70 पर आ गया है, जितेश 48 बना चुके हैं इसमें। ये बहुत ही ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी, 30 गेंदों पर 48। बहुत समझदार क्रिकेटर हैं, आसान नहीं है राहुल मात्रे को खेलना। तो जगह बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर आए, शफल किया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौका लगा दिया। बढ़िया शॉट, इस बार आगे बढ़कर खेला, ये भी चौका होगा। और ये इसी के साथ इनका अर्धशतक पूरा। क्या बल्लेबाजी की है जितेश ने, तारीफ करनी होगी इनकी, बेहतरीन बल्लेबाजी। और ये इनका टीएसएल का पहला मैच है, लेकिन लग नहीं रहा है कि पहला मैच है। जिस तरह से बल्लेबाजी की इन्होंने, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, मजे हुए खिलाड़ी। और इस बार एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ खेला हुआ शॉट 4 रन के लिए, 2 चौके लगा चुके हैं पिछली 2 गेंदों पर। जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। और इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवा में देर तक गेंद, और यहां पर चूक हो गई और 4 रन मिल गया एक बार और। बढ़िया बल्लेबाजी, 3 चौके लगातार। ये देखिए बेहतरीन शॉट, लेकिन इस बार कैच भी हो सकते थे। और डीप स्क्वायर लेग पर एक अच्छी कोशिश, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब रोशनी में मैच हो रहा हो और ऊपर से गेंद आ रही हो। और यहां पर चूक गए क्षेत्ररक्षक, और 3 ताबड़तोड़ चौके इस ओवर में। क्या अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं जितेश पुरबिया। 56 पर आ गए हैं सिर्फ 32 गेंदों पर। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक अलग ही स्तर की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है आज।
बेहतरीन शॉट, कट किया इसे स्वीपर कवर की तरफ, 1 रन होगा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है, उच्च स्तरीय क्रिकेट देखने को मिल रहा है। ओवर की समाप्ति, महंगा ओवर ये, 14 रन बने इस ओवर में, 79 रन बन गए हैं 7 ओवरों में सिर्फ। रन रेट देखिए 11.29, वाह। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, विराम लेंगे, वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और ये फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट 6 रन के लिए पहली गेंद पर। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस शॉट पर छाप थी छक्के की, ऐसे बैट पर आई थी, आप देख सकते हैं। बड़ा शॉट, बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। पचासी पर आ गया स्कोर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। एक और बढ़िया शॉट इस बार, हालांकि 1 ही रन होगा, और ये 2 रन के लिए आना चाहेंगे यहाँ पर, लेकिन केतन शायद तैयार नहीं थे, पहला रन धीमे से लिया। और अगली गेंद, केतन का बढ़िया शॉट, 1 रन मिलेगा आसानी से, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट। और ये क्लीन बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी, और जितेश पुरबिया क्लीन बॉल। क्या जबरदस्त गेंदबाजी है चंद्रशेखर के द्वारा, और ये पहला विकेट गिर गया 87 के स्कोर पर, और ये तारीफ करनी होगी यहां पर चंद्रशेखर की। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी है, और एक बहुत ही जबरदस्त पारी, 64 रन की पारी सिर्फ 36 गेंदों के बाद, 37 गेंदों पे। पेविलियन की तरफ वापस जाते हुए, और ये पहला विकेट गिर गया 87 के स्कोर पर, 87 पर 1, एस ग्लोबल 7.4 ओवरों में सिर्फ। और एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। क्या पारी खेली जितेश पुरबिया ने, वाह, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, अद्भुत बल्लेबाजी। जल्दी जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए।
चार्ल्स आए नए बल्लेबाज, बढ़िया शुरुआत चंद्रशेखर द्वारा। चार्ल्स को पहली गेंद डॉट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखते हैं। बदला लिया इस ओवर में छक्का खाने का, विकेट लेकर जितेश पुरेबिया का। फिर से दिखाएंगे रिप्ले एक बार। ये देखिए किस तरह से बेहतरीन गेंदबाजी की। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। लेग स्टंप उखाड़ के बाहर रख दिया चंद्रशेखर ने। बढ़िया शॉट चार्ल्स का इस बार, और क्या ये 1 रन होगा? और ये दूसरे रन के लिए भी आना चाह रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि चौका हो गया है। यहाँ 4 रन। बढ़िया बल्लेबाजी है चार्ल्स के द्वारा। और अपना खाता खोला है चौके से। 8 ओवर के बाद 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया शुरुआत है यहाँ पर। और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और 91 पर 1 है स्कोर 8 ओवरों के बाद। रन रेट अभी भी 11.38। रिक्वायर्ड रन रेट सिर्फ 7.67। राहुल माथुरे का अगला ओवर। बढ़िया शॉट, 4 रन हो गए। क्या बेहतरीन शॉट है ये। छोटी गेंद और उसको सही जगह पहुंचाया उचित व्यवहार करके। ये देखिए छोटी गेंद को क्या पुल किया है केतन ने इस बार। बेहतरीन बल्लेबाजी क्रम है इस दल का एस ग्लोबल। 95 हो गया स्कोर देखते ही देखते। और कप्तान केतन की भी बेहतरीन पारी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और जितेश पुरेबिया की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 17 पर आ गए हैं केतन 11 गेंदों के बाद। और राहुल माथुरे दूसरा ओवर डालते हुए। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी वापसी, 1 रन लिया। बढ़िया शॉट खेला डीप मिड विकेट की दिशा में। चार्ल्स आए हैं तीसरे नंबर पर। ऊपरी क्रम बहुत ही ज़्यादा सशक्त है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ऊपरी क्रम है इनका। तीनों बल्लेबाज बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और चार्ल्स के भी क्या ही कहने। क्या शुरुआत की उन्होंने एक चौका लगाकर। अब देखते हैं कैसा खेलते हैं। बढ़िया शॉट इस बार। एक बार फिर से 4 होगा। जी हाँ, इसके लिए ही ये तीनों बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा सशक्त हैं। क्या बेहतरीन शॉट एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में 4 रन के लिए। क्या बात है। और इसी के साथ 100 रन भी पूरे हुए एस ग्लोबल के सिर्फ 90 ओवर में। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और 183 का स्कोर इन्हें पाना ऐसा लग ही नहीं रहा है। इतनी जल्दी में खेल रहे हैं। अभी तो आधे ओवर भी नहीं हुए इस पारी के और 100 रन बना लिए इन्होंने। अब बेहतरीन बल्लेबाजी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार चार्ल्स ने उसे खेला पॉइंट के क्षेत्र में। 1 भी रन नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी उस चौके के बाद राहुल माथुरे की। ओए बढ़िया गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के थोड़े करीब से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और इनकी आर्म बॉल भी बहुत बेहतरीन है।
बड़ा शॉट इस बार, क्या ये 6 रन होगा? बड़ा शॉट 6 रन के लिए, सीधे सीमा रेखा के पार 6 रन। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी है, और सारे बल्लेबाज यहां पर बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं इस ग्लोबल के। डीप मिड विकेट की तरफ 6 रन, क्या बड़ा छक्का लगाया है चार्ल्स ने ये। और देखते ही देखते स्कोर हो गया 106 पर 1 से 9 ओवरों के बाद। सिर्फ 77 रनों की आवश्यकता है अब 11 ओवरों में, 66 गेंदों पर 77 रन। ऐसा लगता नहीं था जब पारी की शुरुआत हुई थी कि 182 रन 120 रन गेंदों पर चाहिए, तो 66 पे 77 हो जाएगा ये समीकरण। लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी एस ग्लोबल के बल्लेबाजों की, और जो भी आ रहा है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है। चार्ल्स 6 गेंदों पर 14 रन, वाह, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। 2 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया अभी, और क्या शॉट खेला था, वो फिर से रिप्ले दिखाएंगे, लेकिन स्लो मोशन में बेहतरीन तरीके से उसे पिक किया, और बड़ा छक्का। ये अद्भुत बल्लेबाजी एस ग्लोबल के ऊपरी क्रम द्वारा। चंद्रशेखर का अगला ओवर, 2 ओवर में 1 विकेट ले चुके हैं, अच्छी गेंदबाजी की, और ये बढ़िया शुरुआत इस बार भी। केतन ने अच्छा शॉट खेला, शॉट थर्ड मैन की तरफ, एक भी रन। बेहतरीन शॉट, छोटी गेंद, और ये 1 रन लिया स्वीपर कवर की दिशा में खेलकर। चंद्रशेखर का तीसरा ओवर, 2 विकेट चाहिए होंगे यहाँ पर बहुत जल्दी ही सुपर जायंट्स को, वरना एस ग्लोबल तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इस मैच को खत्म करने के मूड में लग रहे हैं। मन बना लिया है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहेंगे। और इस बार देखिए बढ़िया शॉट एक बार फिर से, और दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे चार्ल्स। क्या जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन ले लिए यहां पर, तारीफ करनी होगी, आसानी से 2 रन ले लिए। चार्ल्स बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, चार्ल्स सैम। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं करते हैं सिर्फ, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जितनी भी तारीफ की जाए इनकी उतनी कम, और बहुत ही समझदार क्रिकेटर, ज़बरदस्त प्रतिभा के धनी तो हैं ही। और ये बढ़िया शॉट, और सीधे खेला और स्टंप को लगी गेंद, चौका बचा लिया यहाँ पर स्टंप्स ने, विकेटों ने दूसरी तरफ के। आप देखिए इसको, क्या ज़बरदस्त प्रहार किया था, भुजाओं का पूरा बल लगाया, और दुर्भाग्यशाली रहे यहाँ पर कि नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स आ गए बीच में, एक भी रन नहीं मिला। बढ़िया बैट बल्लेबाजी, इस बार तेजी से 1 रन लेने का प्रयास, और बच गए यहां पर। अगर ये रन लेते तो शायद रन आउट होने का चांस था यहां पर पूरा, लेकिन बहुत ही बढ़िया यहां पर निर्णय था केतन का वापस भेजने का चार्ल्स को। पॉइंट के क्षेत्ररक्षक ने बैकवर्ड पॉइंट पे जबरदस्त यहां पर थ्रो किया। प्रियांक टंडन चीते की तरह फुर्तीले, लेकिन चार्ल्स भी समय पर वापस आ गए, और 1 गेंद बची है इस ओवर में, सिर्फ 3 रन गए हैं। कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए इन्हें, 109 रन बन चुके हैं, 183 का लक्ष्य है, 74 रन चाहिए सिर्फ 61 गेंदों पर। तो यहाँ पर विकेट बचाकर खेलेंगे तो आसानी से मैच इनके कब्जे में पहले ही आ चुका है, ख़त्म करेंगे मैच को। और इस बार तेज़ी से फिर से बढ़िया क्षेत्र रक्षण प्रियांक टंडन का। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर के बाद स्कोर 109 पर 1, और ड्रिंक्स ब्रेक का निर्देश यहाँ पर अंपायरों का। छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे, आपके साथ बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।
We are back live at the Fatima Cricket Ground and we've switched to the English commentary once again. Ace Global have been blasting it out throughout the first 10 overs. 109 for 1. What a start by their openers. Jitesh Purabia playing extremely aggressive knock of 64 of just 37 deliveries, and the captain Ketan and Charles now at the crease. The top order has been in blistering form for them, and they need only 74 to win in the last 10 overs. So the 60 deliveries and only 74 to win now. Jagdeep Bawa, the new bowler, starts off with a short delivery, played well but straight to the fielder, no run taken. That's a good shot. Could be another boundary there, but there's a fielder out there. Does well. Chandrasekhar is the guy. Just a single this time. Oh, and that's a wonderful shot. Pitched it up, but this time played really well towards the covers. Just a single again. Charles plays a really good shot. So Jagdeep Bawa has bowled well till now. 3 deliveries and just 2 from his first over till now. Oh, and this time played in the air, going really high in the skies there. Will that be caught? And he drops it. That was a wonderful piece of bowling, but the fielder not supporting them again. That was not an easy catch. But you will have to take these catches if you want to win the match. It was a really, really long wait for the fielder and eventually drops it. So 2 runs taken by Ketan. That's a wonderful shot again towards the deep mid wicket, just a single this time. Charles back on strike, and Ketan now 23 of just 18 deliveries. Charles 17 of 11. What a partnership these two are having. Another good shot this time by Charles. He's playing so well, but this time straight to the fielder. No run taken. A very good over by Jagdeep Bawa comes to an end. 11 overs have been bowled, 114 for 1. And this over costed them only 5 runs. So that's a wonderful piece of bowling by Bawa. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
Kishore Hande starts his new over. That's a single taken towards the sweeper cover by Ketan. Charles back on strike. Kishore with his next delivery. On strike is Charles. Oh, and that's a good shot played. But that's a really good piece of work there by the fielder at point. Stops that single and almost gets a run out there for his team. But let's have a look at the replay. Wonderful piece of work there by Priyank Tandon. He's such a live wire in the field, this guy. Check, is that a stumping or was he clean bowled? He was cleaned up there. So that was a stumping, I beg your pardon. This was a wonderful work by the wicket keeper, but this was really good bowling by Kishore Hande. Just have a look at that. Oh, and just a confirmation here from the scorer that this was a caught behind. It's probably getting the bottom edge there. We show you the replay, the slow-mo once again. Very difficult from here to tell whether it was a catch or a stump or a, just have a look at that. Oh, and yes, probably that was the chance of a stumping, but as per the umpire, that's a catch as well. So it goes down as a catch, caught behind. So the second wicket for his global down. Charles playing a good hand. 18 of 16 deliveries he contributed. And 117 for 2. Kishore Hande does a really good job here with the ball. Takes an important wicket, and the current run rate has come down to 9.89. Required has moved up to 8.08. This is the last delivery of his third over. Only 3 given of this over by Kishore Hande. The new batsman on strike is Steven, facing his first delivery. Oh, and that's a wonderful drive. That was a full toss offered by Kishore Hande. Played well by Steve. He's off the mark on the very first delivery he faces, and that's the end of a very good over by Kishore. A successful over. Just 4 runs given and a wicket taken in that over. 118 for 2 after 12 overs. And they need only 65 to win in the last 8 overs. The run rate required is just above 8 runs an over. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. So Jagdeep Bawa coming into bowl his second over. He's bowled the first one really well. On strike is Steve. And this time on the leg side, probably a leg bye taken by Steve. Yes, leg bye signaled by the umpire. This is the 13th over. Reaches the boundary in no time. Brilliantly played there. Jagdeep Bawa missing the line here. Bowling him on his pads, and what a flick that was. Whipped it. Oh, that was a wonderful whip shot. Whipping it off his pads towards the deep backward square leg for a boundary. What a shot that is by Ketan. Playing a wonderful knock there. So he's missed the line in this over till now. Both the deliveries that he's bowled. Bowling on his pads. He needs to come back to the off stump and around that.
Jagdeep Bawa has given 5 runs in this over, the first 2 deliveries. Let's see how he bowls the next one. Yeah, this is the one that he should be bowling. That's a good shot played by Ketan. Should be a single only. There's a sweeper cover fielder there for that. Chandrasekhar does well there, just a single. Steve back on strike. A good delivery this time. Trying to extract some bounce from the pitch. A dot played by Steve. Oh, and this time a wonderful shot. A poor delivery outside the off stump, a short delivery, and played towards the deep point for a boundary. And this is what this delivery deserved, given the treatment there. Just have a look at that. Oh, and that was a way outside the off stump delivery and a half tracker almost. Played well by Steve, his first boundary. What a shot that was. And 2 boundaries in this over. Very expensive one till now. Already 10 off the over. Still 1 delivery to go. Oh, and this time he's cleaned him up. He's got him. A wonderful wicket by Jagdeep Bawa. Comes back really strongly, and the 3rd wicket down for AS Global. Steve playing it across the line. Should have played with a straight bat, but that was not the length to be playing an across the line shot, and he gets the inside edge and stumps rattled there. Jagdeep Bawa gets his first wicket and ends the 2nd over successfully. 128 for 3 after 13 overs, and we'll take a quick break and be back soon. That was a wonderful piece of bowling. We'll show you the replay once again. Good delivery. Wrong shot played. Across the line, should have played with a straight bat. We'll be right back. Stay tuned. This is a good comeback by the Supergiants. 3 wickets down for AS Global, and the run rate is still at 9.85 runs an over. 7 overs remaining in this match. Kishore Hande coming into bowl his last over. On strike is Ketan, who is playing so well on 30 of just 22 deliveries. On strike is Ketan. Kishore Hande bowling his 4th over and the last of his spell. Oh, and that's a wonderful start by the bowler. He's bowled a wonderful spell there. Taken only 1 wicket till now, but he's definitely done the containing job brilliantly. That's a good shot. Just a single this time. Long off does well.
Oh, and that's a good shot. Piyush, the new batsman. What a shot that is. And what a start to his innings. Wow. Absolutely brilliant stuff there. Let's have a look at that. Comes down the track and what a shot by Piyush. Off the mark in style with the boundary. Absolutely stunning bit of work. That's a good comeback by the bowler. A wonderful shot this time. Just a single though. Oh, and this time he misses it completely. Very lucky that he did not get out there. Just have a look at that. That was a flighty delivery, and oh, what a delivery that was. He missed it completely. And the end of a wonderful spell by Kishore Hande. 14 overs have been bowled. 135 for 3 is the score. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Last 6 overs remaining in this wonderful match happening at the Fatima Cricket Ground in the Super League. Jagdeep Bawa coming into bowl is next over, and what a start that is by the batsman. A boundary on the first delivery. Playing it towards the fine leg. Ketan. Wonderful shot by him. And he'll have to take care of the line there, Jagdeep. Straying down the leg side. One or the other time in his all overs till now. He needs to bowl it within the stumps, outside the off stump, or maybe on the off stump. That should be his line. Jagdeep Bawa with his next delivery. Oh, and that's a wonderful shot this time in the gap as well. Could be another boundary, but there's a fielder out there. Just a single. The score has reached 140 for 3. Just 43 needed to win this match, and 34 deliveries. So they're closing in the gap quite well between the balls and the runs. Jagdeep Bawa to Piyush now. That's a good shot by Piyush. Waited for the delivery, but straight to the fielder. That was a good slow delivery by Bawa.
Oh, and what a shot that is this time. It should be a boundary. The fielder running brilliantly there to stop it. And what a stop. Wow. Deserves all the praise here. The fielder. Just have a look at that. Effort by the fielder. That was a wonderful shot. Just have a look at how quickly he runs from the long off region towards the deep extra cover region. Stops a definite boundary there and saves 2 runs for his team. Piyush is playing a wonderful hand here. 7 of just 5 deliveries till now. Oh, and this time a wonderful piece of work there by the wicketkeeper, but the batsman was already in the crease. But that was a good delivery by Bawa. Aiming the block hole and executing so well there. Oh, and that was such a good work by the wicketkeeper as well. One side. Oh, and this time again a good Yorker, but played really well towards the deep square leg. Coming back for the second as well. This is really good running between the wickets. Such a wonderful piece of work there by both these players. And that's the end of the 15th over. The score is 144 for 3. And we'll take a quick break and we'll switch to the Hindi commentary till the end of this innings now. Stay tuned, viewers. We'll be right back. Is Global 144 for 3 after 15 overs, chasing 183. और इस 16वें ओवर की शुरुआत और 1 रन से शुरुआत की यहाँ पर केतन ने। राहुल मात्रे आए अपना तीसरा ओवर लेकर। हिंदी कमेंट्री के साथ हम एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। द सुपर लीग का एक बेहतरीन मैच चल रहा है फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर। 183 का स्कोर बनाना है। एस ग्लोबल को 145 बना चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी और तेजी से 1 रन लेने का प्रयास, यहाँ पर रनआउट होने का एक अवसर था, लेकिन सही समय पर केतन ने वापस भेजा पीयूष को। केतन की भी बेहतरीन बल्लेबाजी हुई यहाँ पर। 37 रन 28 गेंदों के बाद, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। कप्तानी पारी खेल रहे हैं केतन। पीयूष भी बढ़िया साथ निभा रहे हैं। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास यहाँ पर, आउट। बेहतरीन गेंदबाजी राहुल मात्रे की, और कितना महत्वपूर्ण विकेट चटका है ये, और वो भी कितने महत्वपूर्ण समय पर। ये देखिए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले पर नहीं है, और जगदीप बावा ने बहुत बढ़िया कैच लिया ये। राहुल मात्रे को ये पहली सफलता और ये चौथा विकेट गिरता हुआ, और ये मैच अब पूरी तरह एक तरफा नहीं रह गया है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी विकेट यहां पर गंवा रहे हैं इस ग्लोबल। 145 पर 4 हो गया स्कोर। 16 ओवर चल रहा है, और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
बल्लेबाज स्ट्राइक पर। बेहतरीन शुरुआत, क्या शॉट लगाया है, लेकिन एक क्षेत्र रक्षक है वहां पर। चंद्रशेखर दीवार की तरह डटे हुए हैं, तारीफ करनी होगी उनकी। धनराज आए हैं नए बल्लेबाज, अच्छी शुरुआत उनकी। पहली गेंद पर 1 रन लेकर खाता खोला। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में बढ़िया शॉट लगाया। केतन वापस स्ट्राइक पर, कप्तानी पारी खेल रहे हैं और इन्हें अंत तक खड़े होना पड़ेगा अगर इस मैच को एस ग्लोबल को जीतना है। अगर इस समय केतन का विकेट निकाल लेते हैं राहुल मात्रे, वो तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त फंस जाएगा ये मैच। बढ़िया शॉट, इतना आसान नहीं है इनको आउट करना, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। 1 रन लिया आसानी से स्वीपर कवर की तरफ खेलकर। उनकी खास बात है कि अंत तक गेंद को देखते हैं, गेंदबाज के हाथ से निकलने तक भी नज़र इनकी गेंद पर रहती है और इसीलिए जिस गेंद को जहां पर खेलना है उसी दिशा में खेलते हैं, खास बात ये। और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास धनराज का, और ये बहुत बेहतरीन यहाँ पर क्षेत्र रक्षण लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक द्वारा। धनराज बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं। 16 ओवर की समाप्ति हो गई है, 148 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 35 रन चाहिए अब 4 ओवर में इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदे और 35 रन, और रन और गेंदों का अंतर थोड़ा सा बड़ा है विकेट गिरने की वजह से। और ये बहुत बेहतरीन मैच यहाँ पर समाप्ति की तरफ जा रहा है। आखिरी 4 ओवर, डेथ ओवर्स बचे हैं इस मैच में। एस ग्लोबल को 35 रन चाहिए 24 गेंदों पर। सुपर जायंट्स के लिए चुनौती है कि कैसे इस मैच में वापसी कर पाते हैं। चंद्रशेखर आए हैं, बेहतरीन गेंदबाजी की। जितेश पुरेबिया को इन्होंने ही आउट किया था, क्लीन बोल्ड किया था, लेकिन जितेश पुरेबिया ने क्या ताबड़तोड़ पारी खेली आज। टीएसएल की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक। विकेट के चारों तरफ उन्होंने चौकों छक्कों की बरसात कर दी आज। और अब चंद्रशेखर का बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर होगा ये, अगर विकेट लेते हैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। और ये धनराज का बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन क्या ये आउट होगा? और ये 6 रन, वाह, बड़ा शॉट पहली गेंद पर, और यही करने के लिए आए थे धनराज। कोशिश कर रहे थे पहली गेंद से बड़ा शॉट खेलने के लिए, और इस बार सफल भी हुए। बहुत बेहतरीन छक्का, लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र रक्षक वहां पर सिर्फ दर्शक की तरह देखता रह गया। और 150 रन पूरे इस शॉट के साथ। बेहतरीन बल्लेबाजी धनराज की। फिर से आपको रिप्ले दिखाएंगे, देखिए क्या बेहतरीन कनेक्शन यहां पर। संपर्क होते ही बल्ले से गेंद बाहर की तरफ चल पड़ी, सीमा रेखा को आसानी से पार कर गई। अगली गेंद चंद्रशेखर की, खराब गेंद, वाइड गेंद, और विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी यहां पर। बेहतरीन तरीके से रोका है, चौका भी हो सकता था ये। खराब गेंदबाजी है, देखिए लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, और आखिरी समय पर विकेट कीपर ने उसे रोका। बढ़िया शॉट, 1 रन मिलेगा आसानी से। लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला हुआ धनराज का बेहतरीन शॉट, और उस छक्के ने इस मैच की कहानी एक तरह से वापस एस ग्लोबल की तरफ मोड़ दी है। 8 रन बन चुके हैं सिर्फ 2 गेंदों पर। खासा महंगा ओवर, खास करके इस तरह की स्थिति में, इस तरह के समीकरण में। सत्ताईस रन चाहिए सिर्फ 22 गेंदों पर, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा ये काम नहीं है, लेकिन विकेट बचा के रखने होंगे। और केतन की तारीफ करनी होगी, खड़ा होना होगा उन्हें। 38 पर खेल रहे हैं सिर्फ 29 गेंदों के बाद। बढ़िया शॉट इस बार खेला, आसानी से 1 रन ले लिया, और क्या दूसरे के लिए आएंगे? जी नहीं, डीप मिड विकेट से आगे आए जगदीप बावा, 1 ही रन दिया। 26 रन चाहिए 21 गेंदों पर। समीकरण पूरी तरह से एस ग्लोबल के पक्ष में ही लग रहा है। देखना है कि क्या कुछ करिश्माई गेंदबाजी कर पाते हैं सुपर जायंट्स के गेंदबाज। अभी तक तो इस ओवर में चंद्रशेखर ने निराश ही किया है, 9 रन दे चुके हैं सिर्फ 3 गेंदों पर। हालांकि गेंदबाज बहुत बेहतरीन है, लेकिन कभी कभी स्थिति और समय आपका साथ नहीं देते हैं। चंद्रशेखर के साथ भी वही हो रहा है, पहली गेंद पर ही छक्का खा गए। और ये बेहतरीन गेंदबाजी, ये देखिए, ये इनकी
ताकत है। धनराज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, पूरी तरह चूक गए। ये देखिए, बहुत बेहतरीन विकेट कीपिंग कहूंगा मैं यहाँ पर। अच्छी वापसी, डॉट गेंद डाल दी है, और अगर 2 गेंदों पर ज़्यादा रन नहीं देंगे तो फिर भी कुछ मौका रहेगा यहाँ पर सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन अगर बड़ा शॉट लगता है अब, तो एस ग्लोबल इस मैच को आसानी से ख़त्म करने की राह पर चल पड़ेंगे। और ये बड़ा शॉट लग गया, और ये यहां पर कैच छूट गया, और 6 रन है क्या, चौका है। बहुत ही ये बड़ी गलती साबित हो सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह कैच छूटा, हाथ का कैच छोड़ दिया यहां पर, और ये बहुत ही जबरदस्त भारी भूल हो सकती है। ये कैच आप नहीं छोड़ सकते, और ये हाथों के बीच से निकल गया। स्लो मोशन में आपको फिर से दिखाएंगे। ये बढ़िया शॉट खेला। इस तरह के कैच आप नहीं छोड़ सकते, खास करके जब मैच विकट स्थिति में हो। ये लचर क्षेत्र रक्षण, ये कैच होना चाहिए था। ये देखिए, दोनों हाथ आपस में जुड़े नहीं, और 4 रन के लिए गेंद चली गई सीमा रेखा के पार, और बड़ा शॉट खेलने का फिर से प्रयास, और ये ओवर की समाप्ति। काफ़ी महंगा ओवर साबित हुआ ये। 13 रन गए उस ओवर में, 12 रन गए, माफ़ कीजिएगा। 34 चाहिए थे और अब 22 चाहिए 3 ओवर के 18 गेंदों पर। 18 गेंदों पर 22 रन। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। राहुल मात्रे अपना चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं। 18 ओवर इस पारी का बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर साबित हो सकता है अगर विकेट लेते हैं तो। बढ़िया शुरुआत यहाँ पर, एक भी रन नहीं। स्ट्राइक पर हैं केतन। कप्तानी पारी खेली है अभी तक कप्तान केतन ने। 39 रन पर खेल रहे हैं 31 गेंदों के बाद, 32 गेंदों के बाद, माफ़ कीजिएगा। बढ़िया शॉट, कट किया उसे, और दूसरे रन के लिए भी आना चाहेंगे, और एक खराब क्षेत्र रक्षण, आसानी से दूसरा रन पूरा किया, और बहुत ही खराब थ्रो भी है। 3 रन हो जाएंगे यहां पर, और ये दबाव में है ये दल। इससे ये साबित होता है सुपर जायंट्स गलतियां कर रहे हैं यहां पर। राहुल मात्रे अच्छी गेंदबाजी के बावजूद रन दे रहे हैं, खराब क्षेत्र रक्षण के चलते। 3 रन मिले वहां पर, 16 गेंदों पर सिर्फ 19 रनों की आवश्यकता। और ये बेहतरीन शॉट धनराज का, और ये 4 रन। वाह, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। धनराज ने भी अपना रोल बहुत बखूबी अदा किया है। देख सकते हैं आप, क्या शॉट लगाया डीप मिड विकेट की तरफ, और ये पैर से रोकने का प्रयास। यहां पर पैर से कहां रुकती हैं ऐसी तेज गेंदें, लेकिन ये शॉट जब बल्ले से निकला था तभी इस पर छाप लगी थी चौके की। 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट धनराज का। और अब ये मैच एक तरह से इस ग्लोबल की पकड़ में पूरी तरीके से आ चुका है। सिर्फ 15 रन की आवश्यकता 15 गेंदों पर, और धनराज की तारीफ करनी होगी, 8 गेंदों पर सिर्फ 17 रन। वाह, एक और बढ़िया शॉट इस बार।
क्या ये दूसरे के लिए आना चाहेंगे? जी नहीं, एक ही रन। 14 गेंदों पर 14 रन की आवश्यकता। राहुल मात्रे ने 8 रन दिए इस ओवर में। कुछ बढ़िया बल्लेबाजी और कुछ लचर क्षेत्र रक्षण के चलते। अच्छी वापसी। पांचवी गेंद बढ़िया डाली इस बार, डॉट गेंद। केतन 42 पर हैं। अपने अर्धशतक के लिए सिर्फ 8 रनों की आवश्यकता केतन को। बड़ा शॉट, इस बार 6 रन होना चाहिए और ये कैच हो सकते थे और छोड़ दिया। बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण। ये कैच जो छोड़ रहे हैं, इन्होंने मैच छोड़ दिया है यहां पर। ऐसा लग रहा था कि 6 रन हो जाएंगे, लेकिन ये तो सीधे हाथ में था कैच, और ऐसे कैच आप नहीं छोड़ सकते। बढ़िया क्षेत्र रक्षण नहीं कहूंगा मैं ऐसे। और ये ओवर की समाप्ति 18 ओवर के बाद स्कोर 171 पर 4। ये कैच लेना चाहिए था आपको। रिप्ले दिखाएंगे। लचर क्षेत्र रक्षण स्लो मोशन में आपको रिप्ले दिखाएंगे। ये देखिए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। प्रियांक टंडन आए हैं तीसरा ओवर लेकर, और ये क्या शॉट खेल रहे थे। खैर, 1 रन मिल गया जहां भी शॉट खेल रहे थे। केतन वापस स्ट्राइक पर, और 11 गेंदों पर सिर्फ 11 रनों की आवश्यकता अब। और केतन को 6 रन चाहिए। एक बड़ा शॉट खेलेंगे और छक्का लगाएंगे तो अपने अर्धशतक की तरफ भी जाएंगे। ये रिप्ले देखिए उस गेंद का। प्रियांक टंडन की अगली गेंद। लाइव आ गए हैं वापस। बढ़िया शॉट इस बार केतन के द्वारा। 1 ही रन होगा। बहुत बेहतरीन यहाँ पर रोका जगदीप बाबा ने। लगता है फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं आजकल फुटबॉल का। बेहतरीन तरीके से उसे पैर से रोका और 1 ही रन दिया। 10 पे 10 चाहिए अब। धनराज आए हैं स्ट्राइक पर वापस। 19 पर खेल रहे हैं सिर्फ 10 गेंदों के बाद। प्रियांक टंडन ने अच्छी गेंदबाजी कराई है। इनका तीसरा ओवर है और ये हवा में खेला हुआ शॉट, और ये आउट हो सकते हैं। और ये कैच छोड़ दिया। एक और आसान सा कैच छोड़ दिया। ये क्या कर रहे हैं यहां पर सुपर जायंट्स के क्षेत्र रक्षक। देखिए, बढ़िया गेंदबाजी, और ये कैच तो आपको लेना है। आप नहीं छोड़ सकते ऐसे कैचेस। इतने बढ़िया क्षेत्र रक्षक हैं और आसान सा कैच छोड़ा। बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण सुपर जायंट्स के क्षेत्र रक्षकों का। हाथ के कैचेस छोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये कैच होना चाहिए था। शायद कूदने की जरूरत नहीं थी, जल्दी कूद गए। और ये एक और अच्छी गेंद, और ये आउट दे दिया है। यहां पर एलबीडब्ल्यू हो गए हैं केतन। जी हां, बहुत ज्यादा यहां पर एक्शन हो रहा है। ऐसा लगा कि 1 रन हो जाएगा, लेकिन एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए यहां पर केतन।
5वां विकेट गिर चुका है एस ग्लोबल का। केतन की बेहतरीन बल्लेबाजी और कप्तानी पारी खेलकर वापस पेविलियन जा चुके हैं। आपको दिखाएंगे कैसे आउट हुए वो रिप्ले में। आपको उस पर क्रश है। और ये वापस लाइव आ गए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने अपना रन अप छोड़ दिया। संदीप गडियार आए नए बैट्समैन। बढ़िया बल्लेबाजी, शुरुआत ही की 2 रन से। बढ़िया शॉट खेला, इस आसानी से 2 रन ले लिए। और ये देखिए कैसे आउट हुए। कैच छोड़ा था ये और 1 रन दिया था यहाँ पर, उसके बाद आउट हुए। आपको दिखाएंगे अभी रिप्ले। तो सिर्फ 7 रनों की आवश्यकता 7 गेंदों पर। अभी भी मैच पूरी तरह से एस ग्लोबल के हाथ में नहीं आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गंवाया उन्होंने केतन के रूप में। बढ़िया गेंदबाजी है और ये ओवर की समाप्ति यहाँ पर। 6 गेंदों पर 7 रन चाहिए अब। बेहतरीन ओवर यहाँ पर प्रियांक टंडन का और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट भी लिया उन्होंने। स्कोर हो गया 176 पर 5 19 ओवरों के बाद। सिर्फ 6 गेंदें बची और 7 रन चाहिए और विचार विमर्श हो रहा है यहाँ पर कि कौन आखिरी ओवर डालेगा। तब तक आपको रिप्ले दिखाते हैं कैसे केतन आउट हुए। ये देखिए, अपील की और अंपायर ने वहां पर आउट दिया केतन को। एलबीडब्ल्यू करार दिए गए। बेहतरीन गेंदबाजी प्रियांक टंडन की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ। आखिरी ओवर बचा हुआ है इस मैच में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जगदीप बावा को दी गई है जिम्मेदारी आखिरी ओवर की। 7 रन बचाने होंगे उन्हें। धनराज स्ट्राइक पर हैं। बहुत काबिल खिलाड़ी, बहुत ही सशक्त बल्लेबाज। अगर चाहें तो एक ही गेंद पर मैच को समाप्त कर सकते हैं बड़ा शॉट खेलकर, लेकिन यहाँ पर संयम बरतना होगा। गलत शॉट लगा तो विकेट भी जा सकता है। 20 रन पर खेल रहे हैं सिर्फ 11 गेंदों के बाद, तारीफ करनी होगी। संदीप गडियार 2 रन पर खेल रहे हैं 2 गेंदों के बाद। बावा की पहली गेंद, बेहतरीन शॉट, लेकिन यहां पर एक शॉट फाइन लेग लगा हुआ है। सिर्फ 1 ही रन। बढ़िया कप्तानी कहूंगा मैं ऐसे। ये शॉट जहां पर लगा वहीं पर क्षेत्र रक्षक तैनात था और इस तरह के शॉट्स आखिरी ओवर में लगाने का प्रयास कर सकते हैं बल्लेबाज। तो अच्छी सोच यहां पर। सुपर जायंट्स के कप्तान की। जगदीप बावा आखिरी ओवर डालते हुए इस मैच का भी और अपने स्पेल का भी। पहली गेंद पर 1 रन दिया है। 5 गेंदों पर 6 रन की आवश्यकता। बहुत ही बेहतरीन यहां पर लक्ष्य का पीछा किया है अभी तक। और ये बेहतरीन बल्लेबाजी, लेकिन बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण इस बार। और निश्चित तौर पर 1 रन तो कम से कम रोक लिया। चौका भी जा सकता था। क्या जबरदस्त प्रहार था, आप देख सकते हैं। और ये देखिए क्या रोका है यहां पर जगदीप ने नी गेंद पर। तारीफ करनी होगी इस तरह के
क्षेत्र रक्षण की, एक टीम के प्रति क्या कमिटमेंट है उनका। शायद चोट भी लगी उन्हें। बढ़िया गेंदबाजी और यॉर्कर इस बार, और एक रन ले गया तेजी से यहां पर, और यहां पर चूक भी हो गई, लेकिन एक ही रन। ये रोकना चाहिए था इन्हें। कोशिश बहुत अच्छी थी जगदीप की, लेकिन जरा सी हाथ से गेंद निकली और एक रन ले लिया। देखिए यहां पर रोक लेते अगर तो शायद रन नहीं होता। संदीप गडियार ने जबरदस्त तेजी से, चीते की फुर्ती से वो रन पूरा किया। और धनराज की भी तारीफ करनी होगी, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी जगदीप की। आखिरी ओवर डाल रहे हैं और क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, वाह। 3 गेंदों पर 4 रन चाहिए और ये मैच अंतिम ओवर तक आ चुका है। बेहतरीन क्रिकेट मैच देखने को मिल रहा है फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर। द सुपर लीग में TSL के नाम से जानी जाती है प्रतियोगिता। एक से एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी और एक से एक प्रतिभावान यहां पर बल्लेबाज और गेंदबाज देखने को मिलते हैं। अब 4 रन चाहिए 3 गेंदों पर। किसने सोचा था कि 182 के लक्ष्य का पीछा करते करते इस तरह का मैच देखने को मिलेगा। और तारीफ करनी होगी दोनों टीमों की। और ये हवा में खिला हुआ शॉट इस बार पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आया, लेकिन 2 रन आसानी से मिल जाएंगे। और ये तीसरे रन के लिए इन्हें आना चाहिए था, यहां पर नहीं आए। 2 रन लिया आसानी से और अब सिर्फ 2 रन की आवश्यकता है 2 गेंदों पर। संदीप गडियार बढ़िया शॉट खेला, खराब गेंद थी, स्लोअर डिलीवरी, हल्की गेंद, धीमी गेंद फेंकना चाह रहे थे, चूके पूरी तरीके से। दो गेंदों पर 2 रन चाहिए। अगली गेंद और ये खराब गेंद और ये 4 रन और ये मैच की समाप्ति कर ली है। यहां पर एज ग्लोबल ने बहुत ही शानदार अंदाज में, आप देखिए, खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, पैरों पर डाली हुई गेंद और 4 रन डीप स्क्वायर लेग की तरफ। संदीप गडियार ने इस मैच को बहुत ही शानदार अंदाज में समाप्त किया। और एज ग्लोबल ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 185 पर 5 उनका अंतिम स्कोर। एक गेंद बची थी सिर्फ 20वें ओवर की और 183 का लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। और अब हम सभी दर्शकों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस बेहतरीन मैच को देखा और हमारा समर्थन किया। और अब हम एक अगले मैच के साथ फिर वापस लौटेंगे जल्द ही द सुपर लीग TSL में। आज के मैच में एज ग्लोबल ने सुपर जायंट्स को हरा दिया है 5 विकेटों से। और मैं शालीन गुप्ता, आपका कमेंटेटर, आप सभी से आज्ञा लेता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बने रहिए हमारे साथ TSL में। एक नए मैच के साथ जल्दी जुड़ेंगे आपके साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि और अपना ध्यान रखिए।